आपका बहुत बहुत स्वागत माननीय। परम आदरणीय माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, विभिन्न राज्यों से उपस्थित माननीय मंत्रीगण, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त एवं अन्य अधिकारीगण, राष्ट्रीय संस्थान एवं राष्ट्रीय संगठनों तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से उपस्थित समस्त अधिकारीगण एवं गणमान्य व्यक्ति विशेष तथा मीडियाकर्मी, आप सभी का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित संवेदीकरण कार्यशाला के दूसरे दिवस की गतिविधियों में सादर स्वागत है। देवियों और सज्जनों, कल हमने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम तथा विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर गहन चर्चा की, जिसके बाद सत्र में विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। 9 राष्ट्रीय संस्थानों में से 7 संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कल हमारे सम्मुख अपने संस्थानों की गतिविधियों को उजागर किया। हमने उन्हें सुना। सत्र की कार्यवाही माननीय मंत्री महोदय जी से अनुमति लेते हुए हम आगे बढ़ाएंगे तथा मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी निदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ मिस्टर नचिकेता राउत जी को कि वे कृपया संस्थान की गतिविधियों पर अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सभा में उपस्थित माननीय राज्य के सभी मंत्रीगण, विभाग की अध्यक्ष सेक्रेटरी मैडम, जॉइंट सेक्रेटरी साहब तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, बंगाल की खाड़ी के मनोरम दृश्य में स्थित 15 एकड़ के विस्तार में विस्तृत स्थित है राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, जिला चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में। पिछले 15 वर्षों से राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान बहुदिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए नित्य नए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पिछले वर्ष हमने अपना 15वां वर्ष पूरा किया। बहुदिव्यांगता यानी कि एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति, इनमें विशेष हैं बधिर अंधता या डेफ ब्लाइंडेडनेस, स्वलीनता या ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात या सेरेब्रल पॉल्सी। इन तीनों दिव्यांगों को बखूबी हमारे 15 वर्ष के क्रिस्टल जुबली लोगों में दर्शाया गया है। अगर आप देखें तो क्रिस्टल जुबली लोगो जो नीचे 15 लिखा हुआ है, उस 15 का निचला हिस्सा ऑटिज्म रिबन के द्वारा बनाया गया है। अगर आप एक को देखें तो वो एक सफ़ेद छड़ी को दर्शाता है। सफ़ेद छड़ी और लाल निशान दृष्टि दिव्यांग की है ये पहचान। निपमेड ब्रेल डॉट्स के ऊपर एम्बॉस किया हुआ है। और अगर पूरी 15 को आप देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक दिव्यांग व्यक्ति या बच्चा बड़े उन्मुक्त सशक्त तरीके से एक व्हील चेयर के ऊपर गति कर रहा है। 2021 एक हरे स्ट्रिप के ऊपर लिखा हुआ है जो कि मेंटल इलनेस या मानसिक रोग के रोकथाम का भी इंगित करता है। पिछले 15 वर्षों में हमने लगभग 35 अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखे हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सेवाएं प्रदान की हैं। इस दौरान निपमेड चेन्नई को 9 राष्ट्रीय पुरस्कार और 7 राज्य पुरस्कारों द्वारा नवाजा गया है, जिनमें प्रमुख है नेशनल अवार्ड फॉर क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। अगर यूनिवर्सल डिज़ाइन को कहीं मूर्त रूप में देखना है तो मैं आप सबको निमंत्रण करता हूं कि आप निपमेड चेन्नई आएँ और एक्सेसिबिलिटी के सारे फीचर्स को किसी एक बिल्डिंग में होता हुआ देखें। और अभी अगर वक्त मिले आपको तो निपमेड
कि वेबसाइट nipmed.tn.nic.in पे ज़रूर जाएं, जहां की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ऑन द वेबसाइट्स को कैसे लागू किया जाता है उसे आप देख सकते हैं। जो सेवाएं हम प्रदान करते हैं वो मुख्यतः हैं शीघ्र हस्तक्षेप, शिक्षा और शोध, पुनर्वास की सेवाएं, चिकित्सा की सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सेवाएं, सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण की सेवाएं। इन सेवाओं को इन डिपार्टमेंट्स या विभागों के द्वारा दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां चिकित्सा की सेवाओं के अलावा विशेष सेवाएं जो दी जाती हैं वो है दंत चिकित्सा की सेवाएं, डाइट्रिशियन की सेवाएं, साइकियाट्रिक क्लिनिक, जहां की दिव्यांगों, उनके माता पिता के मानसिक समस्याओं का निदान भी किया जाता है। दूसरा विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहां की कृत्रिम अंग बनते हैं। विशेष ये है कि हमारे पास लगभग 3 करोड़ रुपए के लागत पर CSR के माध्यम से एक 3D प्रिंटिंग मशीन इंस्टॉल किया गया है, जहां की 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। अगला विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा का विभाग। आम सेवाओं के अलावा विशेष सेवाएं हैं बॉडी वेट सपोर्टेड ट्रेडमिल ट्रेनिंग, कार्डियो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन तथा हाइड्रोथेरेपी की सेवाएं। अगला विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी या व्यावसायिक चिकित्सा। इस विभाग की विशेष सेवाएं स्वलीन बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हैं, जहां की ग्रुप थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और VRBT वर्चुअल बेस्ड रिहैबिलिटेशन थेरेपी दिया जाता है। अगला विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जहां मनोचिकित्सा काउंसलिंग के अलावा विशेष सेवाएं हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना और साथ ही साथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के क्लिनिक चलाना। अगला विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच हियरिंग एंड कम्युनिकेशन। श्रवण वाक चिकित्सा नवीनतम तकनीकों के द्वारा दी जाती है। वाक चिकित्सा के विभाग में मल्टी सेंसरी स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन बोर्ड हमारे द्वारा इजाद किया गया, जिससे कि थेरेपी दी जाती है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास साउंड ट्रीटेड रूम्स हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट ऑडियोलॉजिक इक्विपमेंट्स हैं, जिनके माध्यम से श्रवण जांच किया जाता है और साथ ही साथ डिजिटल हियरिंग एड्स निःशुल्क दिए जाते हैं एडिप स्कीम के तहत। ENT की सेवाएं भी इस विभाग में उपलब्ध हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन एक विशेष पहल, जिसमें कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की सभी ज़रूरतें एक छत के नीचे दी जाती हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी की सेवाएं हों, ऑक्यूपेशन थेरेपी की सेवाएं हों, स्पीच थेरेपी की सेवाएं हों, स्पेशल एजुकेशन की सेवाएं हों, क्लिनिकल साइकोलॉजी की सेवाएं हों या अन्य किसी तरह की सेवाएं हों। विशेष इसमें है ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ थेरेपी, जहाँ की सभी स्पेशलिटीज़ के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर प्ले वे मेथड में खेल खेल के माध्यम से बच्चों के साथ थेरेपी की जाती है, ताकि कम समय में खेल के माध्यम से सब कुछ सिखाया जा सके। अगला विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जहाँ की B.Ed, M.Ed और D.Ed के कोर्सेज चलते हैं। लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ कम्युनिटी में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाता है। अगला विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, जो कि एक सूत्र का काम करता है सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ने का और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं वो दिव्यांगों तक पहुंचाने का। इसमें विशेष है एक रेस्पाइट केयर यूनिट। ये एक ऐसा यूनिट है जहां आप दिव्यांग बच्चे को माँ बाप कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, चाहे वो 3 घंटे के लिए हो, 4 घंटे के लिए हो, और अपने काम पे जाकर वापस आ सकते हैं। अगली सुविधा है मॉडल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ
मल्टीपल डिसेबिलिटी, जहां अलग अलग सेक्शंस हैं, ऑटिज्म के लिए, डेफ ब्लाइंड के लिए, मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए और सेरेब्रल पॉल्सी के लिए। इस स्कूल की विशेषता है कि यहाँ टीचिंग मेथड्स स्टेट ऑफ आर्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और साथ ही साथ करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन थेरेपी लैब भी है। यहाँ और एक विशेषता है कि मॉडल स्कूल ही एक ऐसा सेंट्रली एडेड स्कूल है जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की मिड डे नून मील स्कीम लागू है। मिड डे नून मील स्कीम में अभी का जो शोध का विषय हमारे लिए है वो ये है कि अगर एक बहुदिव्यांग बच्चे को आसानी से खाना खाना हो तो उसके लिए कौन से फर्नीचर मॉडिफिकेशंस चाहिए, कौन से यूटेंसिल्स में मॉडिफिकेशन चाहिए, स्पून्स में मॉडिफिकेशन चाहिए, या किस तरह का खाना होना चाहिए ताकि वो बच्चा बेहतर तरीके से खा सके। डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग व्यावसायिक प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित ये विभाग कई तरह के कोर्सेज चलाता है, चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स हो, एनिमेटर का कोर्स हो, मल्टीमीडिया डिजाइनिंग का कोर्स हो, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का कोर्स हो, नॉन लीनियर एडिटिंग का कोर्स हो या स्मॉल पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स हो। वयस्क व्यक्ति बहुदिव्यांगता से ग्रसित कंप्यूटर का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें, इसलिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब है, आईसीटी लैब, जहां अलग अलग तरह के स्विचेस के मॉडिफिकेशन, माउस के मॉडिफिकेशन, कीपैड के मॉडिफिकेशन तथा अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनसे कि बहुदिव्यांग व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। ये हैं हमारे दीर्घकालीन कार्यक्रम। दिव्यांगता के क्षेत्र में लगभग सारे कार्यक्रम निपमेंट में चलाए जाते हैं, 16, चाहे वो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी का कार्यक्रम हो, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन हो, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन हो, बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी हो, बैचलर्स इन ऑक्यूपेशन थेरेपी हो, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी हो, या बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन हो, केयर गिवर कोर्सेस हो या आरसीआई की नवीनतम सीबीआईडी कोर्स हो। पिछले वर्ष हम लोगों ने कई वेबिनार, ओरिएंटेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम किए। हर दिन, कोविड का समय था, हर दिन लगभग 2 से 3 वेबिनार्स कर दिए जाते थे। 701 वेबिनार हम लोगों ने किए, साथ ही साथ सीआरई प्रोग्राम्स भी किए 72। किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया ये एक बेहतरीन प्रयोग है जिसमें कि मानसिक रोगी टेलीफोन के माध्यम से सुविधाएं ले सकते हैं। इसका भी संचालन निपमेट चेन्नई में होता है। पिछले वर्ष हमने 4 ई बुक्स पब्लिश किए और SC/ST तथा नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में कई कार्यक्रम किए। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 123 कार्यक्रम किए और उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के लिए 107 कार्यक्रम किए। विशेष इस वर्ष का ये है कि मेघालय स्टेट के सारे 12 डिस्ट्रिक्ट के 13,000 ग्रास रूट लेवल वर्कर को ट्रेन करने का इस साल का टारगेट हमारा है, जिसमें कि हम लोगों ने 2 सेट कार्यक्रम कर लिया है। इस साल के अंत तक पूरे राज्य के ग्रास रूट लेवल वर्कर ट्रेन हो जाएंगे। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन NBER भी संचालित करते हैं हम लोग, जहां की 360 इंस्टीट्यूट्स के लगभग 13,000 से ज़्यादा बच्चों की परीक्षाएं, मूल्यांकन और साथ ही साथ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे 3 CRCs हैं जहां की यही सेवाएं दी जाती हैं और पिछले वर्ष निपमेड ने लगभग 23,000 से ज़्यादा नए मामले और 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअप केसेस को सेवाएं दी हैं। ये कुछ कार्यक्रम है जो कि मीडिया की सुर्खियां बनी। हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, अनुग्रहित हो और आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप निपमेट चेन्नई जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अरुण बानिक जी को, डायरेक्टर अलियावरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, कि वे अपना प्रस्तुतिकरण कृपया प्रारंभ करें।
नमस्कार। सर्वप्रथम आज महाकालेश्वर की उनकी कृपा दर्शन के आशीर्वाद लेके आज के ये सभा का शुभारंभ जो करना चाहता हूँ। आपने देख पाए ये जो पिक्चर अली अबर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, हिंदी में इसको अली अबर जंग वाक श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, ये जो पिक्चर आप देखते हैं इट इज अ funds of the institute situated in Mumbai. The institute is a very famous institute under the Ministry of Social Justice and Empowerment, serving for the populations of speech and hearing disabilities in India. ये institute established हुए थे in 1983. It is around 40 years. 40 years. This institute is giving the service around 20 lakhs populations in the country who are having the hearing problem, speech problem, communication problems, and others associated problem in relation to speech, language, and hearing. आप देख पाएंगे ये जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट इनके हेडक्वार्टर मुंबई में है। हमारे रीजनल सेंटर एनआरसी नोएडा, पहले ये दिल्ली में था, अभी ये शिफ्ट हुआ है नोएडा में। सिकंदराबाद, टीसीटीटी भुवनेश्वर, इट इज़ इन जानला, कोलकाता, ये हमारा चारों रीजनल सेंटर है। इसके अलावा भी हमारे अंडर 3 सीआरसीज है, सीआरसी भोपाल, सीआरसी अहमदाबाद, सीआरसी नागपुर। ये सातों जो रीजनल सेंटर्स है प्लस सीआरसीज, इट इज़ रन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। ओवरऑल एवरीथिंग, entire institute is under the control of Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. इसमें आप देख पाएंगे हमारे अलग अलग जो सर्विसेज बोर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट, द ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च, एजुकेशनल प्रोग्राम, क्लिनिकल सर्विसेज, कम्युनिटी प्रोग्राम, मटेरियल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशंस। ये बहुमुखी इंफॉर्मेशंस ऑब्जेक्टिव लेके ये संस्था काम करते हैं, and it is one of the prime important institutions in India located at Mumbai and working for this cause which I am shown here, all the objectives here. With these objectives, the institute has grown up and it has got about 12 national awards since last 40 years. And it has been recognized by state government and many other agencies. The vision of the institution, after all, this institute is serving for the populations of hearing, speech, language and communication disorders. Vision is prevention, identification, intervention and mainstreaming. हर लोगों को, हर बच्चों को तमन्ना होता है अपना ज़िंदगी में खड़े हो, डेवलप करे। आफ्टर ऑल सिमिलर विजन्स दिस इंस्टीट्यूट इज हैविंग एंड वी आर इन द लाइन ऑफ वर्किंग इन दिस लाइन ऑफ दिस विजन्स। ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के बहुत सारे हमारे सेक्शन से डिपार्टमेंट है। मेन डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियोलॉजी, जहाँ हियरिंग असेसमेंट हम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जहाँ विभिन्न प्रकार के स्पीच प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स और एनी अदर डिसऑर्डर्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिलेड
जो देर से बच्चा देर से बोलते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उच्चारण में असुविधा, हकलता है, stuttering problems, voice problems, language difficulty after stroke or any other neurological difficulty, totally lost the language, finding difficulty for communications. So all this been taken care, so the speech language pathology. In these two department, also after assessment we are certifying who are the person eligible to get the disability certificate, either in hearing disability or speech language disability. Based on the assessment, we give the certificate from the institution, and this institution is recognized by Government of Maharashtra, where they have been authorized to issue the certificate. And we have a medical board. We have a medical boards, and these medical boards constituted by doctors and experts. After assessment, we issue the certificate for disability for this population. Department of Education again is a very important department on special education. Department of Psychology. Apart from this, outreach and extension services, socio-economic, academic cells, and these are the all supported unit in the institutions where fulfilling the objective of the institution. This is already I spoken. The activities, the human resource, clinical services, research, outreach, all these things I already spoken in previous slide. If you see here, which I already narrated, the audiology, speech, psychology, education, SCRD and outreach. What are the different activities that we are doing? Like audiology, hearing screening, diagnosis and treatment of hearing aids, hearing aid repair and troubleshooting, ear mold, counseling guidance, disability certification, issue of certificate for driving license, cochlear implantation and candidacy. This is a little bit I'll elaborate in few my next slide. We'll talk about cochlear implant and how we are providing the services of cochlear implant. And this is the speech language pathology. Again, you can see the medical consultation, speech language evaluation, speech therapy, voice therapy, post cochlear implant rehabilitation program, and disability certification in the area of speech language and psychological evaluation. Similarly, the clinical evaluations like psychological evaluation, counseling, psychotherapy, behavior therapy, play therapy. Education again, educational evaluation, early identifications, preschooling, then support services, mainstream children, open education. This is again, we can see, we have this institute has a study center for National Institute of Open Schooling. Those children who are dropout school children, they have been admitted to our open school children, and through the open school children, we are giving education for 10th, 12th standard, then into the higher, supporting them, guiding the parents for higher education as well. This is highly successful, and nearly about 200 children, 200 school dropout children admitted to that under the NIOA scheme, and all are successful. And after having this NIOA certification, we are trying to pull them into the skill development training program. We have a vocational training program under SCRD, where we are running the skill development program, computer program, vocational, other vocational training program. We have put them into that vocational training program, and there also where the program is very successful. Children who are passing out is almost 90% has got the placement. Outreach against outreach services. This is again very important services that we provide services through the camp.
different kinds of camps. Like what I am trying to emphasize here, outreach services, we provide camp. Camp again, it is a different kind of camps. It is basically classified the camp either very informal camp or formal camp. Again, in different categories of camp we organize, like the screening camp, diagnostic and treatment camps, composite camps. As I have shown you the previous slide, we have a composite regional centers where we have a multi-variety of experts. So through them, we organize the composite camps where all disabilities are combined together, assessment and providing the services on the camp. In diagnostic camps, essentially for the hearing assessment and fitments, we do the hearing assessment services on spots on the camp area, rural area, and based on the assessment, whoever required the hearing aids, we provide hearing aids after making appropriate programming through the computer system, through the software system. So this is, I would like to invite your attention. Here we have many secretaries from different places, disability commissioner from the different states. So we like to collaborate with such states where you would like to have our services through the camp. So we can always provide you services. You can write to us, request your approach, and with your collaborations, we can provide our services. We can come to your place. I can send our team, expert team, and then we can provide the services for people who require our services. This is again, you can see the in the first slide I have shown one of the objectives is that human resource development. Under the human resource development, we have different categories of programs: short-term program, long-term programs, and different certificate levels or orientation levels programs. So under this under these long-term programs, we have doctoral programs both in audiology and speech language pathology and special education. Two different categories of disciplines these institutes run the programs. One, this is the total on medicals area, and this is totally on the special education area. If you see this doctoral program, both the scheme we have PhD program, PhD in audiology and speech language pathology and PhD in special education. All this program, the medical science, this program is affiliated with Maharashtra University of Health Sciences, and the special education program is affiliated with Mumbai University, and we are highly successful in PhD programs. So far from our institutions, about 12 PhD has been awarded from both the universities. We have a master degree program in speech language pathology. Now it is Rehabilitation Council of India. He has segregated the program, MS in audiology and MS in speech language pathology. Though we have requested the combined program, MSc in audiology and speech language pathology is also combined degree, also useful program, and it should be considered by the chairpersons and the member secretary and the expert groups of the Rehabilitation Council of India to restart such programs, which is very essential, because in personally as an expert and academician as well as administrator, my experience says that in our country still we are not ready when you are making this segregated, though there is a specialty, but when you are making the segregations of MS in audiology and MS in speech language pathology, placement or creation of such post in such specialty is finding difficulty.
India is not yet ready. Till it is ready, I feel the combined degree, master in audiology and speech language pathology should continue. If not, at least option should be there. Whoever institution like to have any kind of program, they can adapt from the RCI program and they can continue. So we have, this is a 2 years program, and Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology, it is a 4 years program. Why I am giving this information? Because here you people are there from different states. Essentially, the northeastern states, the Jammu Kashmir, Ladakh, those regions, these informations are rare. Specialty in this area is rare. We are not getting students from those areas. Though we are conducting the programs like the common entrance examination through all over India, but still those representation from those areas are very less. The commissioner from northeastern regions, from all the states, I request, encourage the student to apply, to come out, to take this very demandable course, so that after passing out they can give the services to your own state. So which is very important. I feel this should be that is why I appreciate our secretary madam. She has and our ministers are organized such a beautiful this sensitization program. This is actually the common platform where we can share our experiences, and so the people should know what the institutions are doing and what the demands or the requirements in the country. So in this ground, I think it required everybody's effort to come out with good numbers of the experts who can giving service to the peoples. Yes. So I'll make short my very shortly, and this is again which I talked to you about the short-term training program, that awareness program, orientation program, refresher course, workshop, seminar. This is the common program that we give. This is I'm going to skip, try to make it short, which I told that the services we have provided about so far is about more than 20 lakhs. So here, one thing I would like to emphasize, this institution has implemented all the government schemes, essentially implementation of the RPT provisions, then ADIP schemes, essentially the hearing aids and cochlear implant and skill development programs. This is which I already spoken. Here, I'll just give information that institutions is implemented the cochlear implant scheme widely in the country, and this is Ali Abarjung Institute is the nodal agency for implementing that cochlear implant scheme. So cochlear implant, if you see what exactly it is, this is the cochlear implant. If you see this is the picture of the entire ear. The entire ear, our hearing is a very sensitive hearing. Dr. Banik, Yeah. I'll request that all these details can be shared with the participants, with the delegates, Yeah. and the copy of PPT can be given to them. Okay. And if we can wind up, because we have lots of presentations lined up today, No problem. right? Yeah. Thank you. Yes, okay. So this is I am not showing this video. The Synchrony Cochlear Implant System. Yeah. So regarding this cochlear implant program, we are widely implemented, and I request that for getting more number of beneficiaries, you can always send your application. You can go to our website. You go to our website where detail of the cochlear implant schemes it is written, and you can apply through our online, so that eligible candidate, our board, the cochlear implant, the committee will decide who are the person fitting for the cochlear implant. Accordingly, we will fit for it. So far, 219. Yes, I'll go ahead. This is our the
different partners, CSR partners, and supporting our institutions with advanced development and making the institutions with update technology. And cochlear implant, again, we have a surgery team and post-surgery teams. So we have all over India we have 219 the surgical centers. And I'll just like to inform you just this point for your information purpose. Any cochlear implant, if like to have, please send your applications. Along with the application, child's birth certificate, income certificate of the parents, disability certificate of the child, Aadhaar card, photograph of the child, all clinical reports, audiological reports, speech language evaluation reports, psychological reports, and aided audiogram. These reports are very essential, and along with these radiological reports like the CT scan and MRI report is also required. And along with this, if any other medical reports are there, along with this report, you please send the application to us so that we will look into this, and accordingly we will decide whether the child is fit for cochlear implant surgery or not. So far we have around 5,000 numbers. So far we have surgery done, and about all these surgery cases are under post-rehabilitation program is going on throughout India. We have a specialized center. The post-rehabilitation center is there where recognized expert audiologists, speech language pathologists are working and for giving the continuous speech therapy. So, Banik sir, yeah, Manik sir, I think we can wind up here. Yeah. And we can share all this presentation with all the states. My only point for consideration for all the states is that this is a scheme which has been started by Government of India recently. Recently means for the last 4-5 years it is going on. And there the subsidy amount means the entire amount is subsidized. One cochlear implant surgery costs around 7 lakhs. So the entire amount is paid by the Government of India to the eligible candidates. And Ali Awarjung implements this scheme by empaneling the hospitals all across the country. At present, we have around 219 hospitals empaneled, which we have already decided to review the list, because there may be many hospitals who are not doing any work, but they are in the list just for increasing their कहाँ वो empaneled है उसमें list में नाम जोड़ने के लिए, but they are not doing any worthwhile work. So we are going to review that list also, but this is for the information that this is a scheme which is run by Government of India. And if you have any hospitals who can apply to, who are eligible basically as per the conditions to perform cochlear implant surgeries, they can be considered by Ali Awarjung, and he was trying to explain the process that how a beneficiary can be empaneled. Beneficiary can enter into the system. I'll request Dr. Banik can brief. Dr. Yeah. Banik, let's stop here because we have a lot of presentations as I said earlier. Yes, madam. So then I think we नहीं सर ये अलग से बात कर लेंगे सर, जिसको पूछना है सर डॉक्टर बानिक उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे. सो नाउ अनुपमा प्लीज स्टार्ट. थैंक यू बानिक सर. ओके, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद सर. May I now request the Deputy Secretary, DEPWD, Mrs. Meena Sharma ma'am, to kindly come on to the dais to felicitate the directors of both the National Institutes who have just given the presentations. I request Mr. Nachiketa Raut sir, Director, National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai, to please come on to the dais, please. I now request Dr. Arun Banik sir, Director, Ali Awarjung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Mumbai, to kindly come on to the dais.
Thank you, ma'am. Thank you, sir. With due permission of the chair, we are now beginning with the session on presentations by various states on best practices and success stories. I take this opportunity to kindly invite Shri Bhaskar Sharma sir, Commissioner cum Secretary, Department of Social Security and Empowerment of Persons with Disabilities, Orissa, to kindly start his presentation. Respected Union Minister for Social Justice, respected ministers from states, Secretary Government of India, ladies and gentlemen. I begin with some of the schemes that Government of Odisha implements. And the first one I will talk about is our Bhima Bhoi Samarthya Yojana. We spend about 28 crores. We organize camps not only for schemes for the state government, for UDID card, we also organize camps for providing equipment under the Union government's ADIP scheme. We also support disaster relief, we provide scholarships, and this fund is kind of flexible. I can spend up to 30 crores in a year, but this year it is 28 crores. I will talk about SEEP actually. I took Secretary ma'am once to this institute. This is actually meant for children. Yesterday our minister spoke about the survey that we conduct in Odisha every year through Anganwadi workers to identify children with disability in the age group of 0 to 5. We started last year, we identified 50,000 such children. Now we invested about 22 crores in setting up the center in Bhubaneswar, equal amount, about 22 crores in Barhampur, Sundargarh, Jajpur, and now Rourkela. We 73 plus 20, about 100 crores we spent in these institutes. The annual running cost is about 5 crores. What do? We have got a base of about 50,000 children. We identify through the health institutions those children who have a positive chance of being better. Unfortunately, we don't have the capacity to attend to all the disabled children. We get about 200 at a time to Bhubaneswar, 200 at a time to all those institutes individually with the mother. We allowed the father initially, but because of several issues, we stopped allowing male attendant with the kids in any center today. We provide diet food, about 400 rupees, 200 rupees, more than 200 rupees per person per day on food. Keep them up to 2-3 months depending on therapy requirement. And many of the children, it's a very happy, many of the children have actually gone back to normal school. The Bhubaneswar Center also acts as a center for promoting inclusive education in 5 schools nearby this center. Those schools send children for therapeutic services to SEEP, but then otherwise they are in the inclusive school. It is the building of Barhampur and then Bhubaneswar. Ma'am saw Bhubaneswar building, but it's the Barhampur is a bigger building. Some of the equipments that we have in SEEP here. The Advanced Rehab Center, yesterday the presentation from Hyderabad, DPIP spoke about it. There was some discussion with DPIP way back, maybe 5 years back. The ideas came that the best kind of artificial limbs are developed by CAD/CAM. We set up Bhubaneswar first, then we set up in Sundargarh, Rourkela, Keonjhar, Angul.
many of you may not know, because I did not know. Normally we take 10 to 15 days for creating the mold for an artificial limb. This machine takes less than a day, a few hours, and accuracy level is unmatchable. We do about 100 ordinarily per month in a center, but then if we can go up to 200 if we put additional manpower. It's possible and doable, we do that. We spent about, I think, 10 to 12 crores as capital cost, and running cost is about 1.5 crores per year, per center. These are the equipment in this advanced rehab center. It nothing but DDRC plus, it has all the what DDRC has plus this CAD CAM and robotics. I can give a hand to somebody today with which he can write. Just imagine. I can give a leg with which he can dance, he can do whatever. But these are again, we do only on select cases, not as a rule, but we do give. I'll tell you about one more thing about cochlear implant. I didn't know about it. Ma'am came, she told us. Then we went to a school. It is about 6 months back. The school was not good, one of the lesser schools on here for hearing impaired. About 120 students. All of them were taught by sign language. All the classrooms had. We got them tested in SIP. You know what? 20 of them require cochlear implant. I didn't know the name before ma'am told me. 50 of them were actually partially hearing impaired. With hearing aid and speech therapist, they would probably become now, better. Only the remaining one are doubtful cases, which we'll try with speech therapy and then maybe, I don't know. My limited point is, we sometimes go for a shortcut. Now, is sign language redundant? No. It's like braille books for a blind. A blind person can hear. But can you replace braille books by audio? No. Because for him, it is the eye. His braille is his finger is his eye. We can't replace it. But we can do much more by doing what we are supposed to do. This school we have taken up, we'll take up all the 37 schools in the days to come. Another thing I must mention here, though it's not part of the presentation, about hearing aid. Again, that school, we had given to about each student a hearing aid. It was bulky, it was kept in his room, and they were not using it at all. Then, lot of requests is to go to our CM office for advanced hearing aids. Once I was called and told, it can't happen like this, you sort out. Then CGSS had a guideline which limited, I think, hearing aid in the canal to 9,000 rupees, behind the ear to 8,000 rupees. Whereas I was told to give companies like Phonak, Starkey, Siemens, Widex, these names were given to me. I called the companies and saw the rates, it was 24,000 plus. But I was told to give. So actually I called these companies and I told them there will not be any corruption. There will not be, nobody will ask you for anything, won't be any delay. Can you believe it? I get for less than 8,000 rupees. Those with Bluetooth, you can modify that from a mobile phone, very tiny. I get for less 8,000 rupees. We are giving to all the school students this year. Whoever is positively, whatever you call, accepting, because other cochlear implant, all those cases will wait. But rest of them will get this year. We are spending 2.5 crores, 2.35 crores. I have got budget of 2.5 crores for this year. Yeah, we have also done a drive for prosthetics this year. Now, this is my second issue I was talking about. We have actually spent about 40 crores per district to set up an integrated infrastructure complex. Initially, we planned for all 30 districts, but then we scaled down to
10. 6 are completed. Now each one of this integrated complex will house a school for intellectual disability. There are basically 4 wings in each building. One school for hearing impaired, one school for visual impaired, and one home for the old age home or destitute home. Either of those two will be housed there. It has accommodation for teachers, wardens, inbuilt into this complex. Why did we scale down? We scaled down because of many reasons. One reason is not all NGOs are honorable. Now, almost all the old age homes that are running, I have got about, I think, 53, all of them refuse to shift. I went to an old age home without telling who I am, with my very good friend, again an IAS officer. He said he was in the IAS. Both of us visited. He went back. I stayed back. The inmates were leaving. I asked, "Kya hua?" They told me that this lady is such a good lady, Geo Volim, and is like my daughter, our daughter. So whenever she calls, we come and we go back. So it is very difficult to shift. That's why we have scaled down. We will not do the second phase of IIC now. Unless we force, they are not coming. So old age homes are not coming to the IICs now. These wings are empty. But other schools are coming. We are also creating new schools. But imagine each IIC will house about 600 to 800 students. So even 10 IICs will cover almost all the special needs children in Orissa. We have got 6,000 students in about 100 schools. So this present strength is enough, but we have got in principle approval of cabinet. What in principle? I have got a budget also for phase 2 for creating in every district. Some photographs. Sambalpur IIC. This is in Kandhamal, Fulbani, that is IIC. This is in Bhubaneswar, very close. I will take somebody whenever anybody comes here. It's very close to Bhubaneswar. I won't talk about DDRCs here. All of us know about it. I won't talk about therapy center. Yeah, we actually have a service for senior citizens. We will be covering all the districts in phases. We provide equipment to DDRC mainly. Our budget is about 1 crore, but tender cost came to less than that, I think 70-80 lakhs. So we provide this equipment for providing different therapies to the elderly. I talked about survey of children with disability. It helped because I was holding both the posts for a long time. So WCD department and Social Security department signed an MOU. The Anganwadi workers survey for identifying children with disability. Every month a report comes. We have trained them in multiple rounds and we pay them 50 rupees for every child identified. So there is an incentive. So I get continuous update through an app. My database gets updated. We know where the children are, who the children are. Our professionals assess them. And people again mention who are positively inclined to improvement, we bring them to our SEEPs. About SEEP, my minister mentioned yesterday, we have got I think 4 running, 1 ongoing and another 6 coming up. These will be actually be the hubs for providing services to the entire state. I won't talk about special education here. Numbers are immaterial. We give scholarships, doesn't matter. No, it doesn't matter. We got a praise for Braille. No. Yeah, my last point.
this department, all our services is online, anything and everything. You can use your mobile phone, there's an app, Aadhaar verification is inbuilt, and because Aadhaar verification is inbuilt, even approvals are also automatic. We don't need to approve artificial limb or whatever. You provide it and it's automatic. Thank you. Thank you so much, sir. The House is open for questions or suggestions, if any, please. If there are no questions, sir, with due permission of the chair, shall we invite the next speaker? Before inviting the next speaker, I would like to request Honorable Minister, Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumarji, to kindly felicitate Shri Bhaskar Sharma, sir, for his presentation. I request Shri Bhaskar Sharma, sir, to kindly come onto the dais, please. Thank you so much, sir. With this, I would now like to take the opportunity to invite Shri Sumer Singh Gurjar, sir, Secretary, Social Security, Women and Child Development from Punjab, to kindly start his presentation. And I would like to request all the presenters from the state to kindly take a tap of the time limit and wrap up the presentations under 15 minutes, please. बहुत ही सत्कार योग ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस, ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ गोवा, सेक्रेटरी मैम, ऑल पार्टिसिपेंट्स, मैं सबसे पहले तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी मैम और पूरे डिपार्टमेंट को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इस तरह का प्रोग्राम जो सेंसिटाइजेशन का रखा है। कुछ पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं कि नए हों, पहली बार आए हों, कुछ इस डिपार्टमेंट्स में या इस तरह की पोस्ट पे पहले भी रहे हों, वो ऑलरेडी सेंसिटाइज हों। सर, गवर्नमेंट की जब फंक्शनिंग करते हैं तो खासकर इस तरह का जो इश्यूज हैं बड़े नेगलेक्टेड रह जाते हैं। सारे सेक्रेटरीज या मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स के जो बड़े काम हैं कई बार उनको ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, डिसेबिलिटी की तरफ बहुत कम ध्यान होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि मेरे पास कमीशन डिसेबिलिटी का चार्ज भी है और आए दिन कंप्लेंट्स आती है डिपार्टमेंट्स की। एक कंप्लेंट्स एक दिन आई कि हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है कि भाई जो डिसेबल जो है उसको उसके घर के नज़दीक पोस्टिंग देनी है। एक टीचर की कंप्लेंट आई कि जी मुझे दूर ट्रांसफ़र कर दिया। जब डिपार्टमेंट्स को लिखते हैं कि इस पर टिप्पणी भेजो या इस पर कार्रवाई करो तो कई बार नहीं कार्रवाई होती, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को और बड़े काम बहुत हैं। फिर डिपार्टमेंट को समन करना पड़ता है, जब समन करना पड़ता है तब काम होता है। तो उसका ये रिजल्ट निकला कि एक टीचर की ट्रांसफर के चक्कर में 25 हैंडीकैप्स जो टीचर थे PWDs उनकी ट्रांसफर लिस्ट आई, क्योंकि इतनी एप्लीकेशन पेंडिंग थी पर कमिश्नर को सिर्फ एक ने अप्रोच किया था। तो इसलिए ये सेंसिटाइजेशन जरूरी है। सोसाइटी डेवलपिंग सोसाइटीज में कई बार इन इश्यूज को नेग्लेक्टेड किया जाता है। मैं सर एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। एक दिन मुझे हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मैडम जानती है, गुरु साहब का मुझे फ़ोन आया किसी इश्यू पे, तो कि जी उस टाइम मेरे पास सिर्फ कमीशन डिसेबिलिटी का चार्ज था, तो कि यार कहाँ लगे हो? मैं कि जी सर कमीशन डिसेबिलिटी। कह जी एक बार वो सुनाने लग गए कि जी एक बार मेरे पास भी ये चार्ज था, तो वो US किसी ट्रेनिंग में गए थे, तो वहाँ पर उनसे पूछा कि भाई कहाँ लगे हो? तो उनकी जी कमीशन डिसेबिलिटी। तो
मतलब इस तरह की पोस्ट को जैसे पंजाब में कहते हैं खुडे लाइन, मतलब लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट समझा जाता है, तो वो धीरे से करे जी मैं बोला कि जी मैं कमीशन डिसेबिलिटी, तो उन्होंने कहा जी इतना मान सत्कार आदर किया कि आप इतनी अच्छी जगह लगे हो। तो जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर इन चीज़ों को किस एंगल से देखते हैं और हम किस एंगल से देखते हैं, इसलिए ये जो सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप है ये सर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और सारे डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी आगे स्लाइड मेरी हाँ? अच्छा नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उनके बारे में सभी को पता है, शिप्रा, एनएसपी, यूडीआईडी, निर्मया। इसके अलावा जो पंजाब सरकार है वो दिव्यांग के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ खास काम कर रही है। मैं आप सभी के सामने वो जो हमारी स्कीम्स है, ये हमारे जो भी मतलब सरकार की मंशा है वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। इसमें एक है ये इस स्कीम्स की लिस्ट है, काइंडली वन बाय वन आगे डिटेल में चलिए। नेक्स्ट जी। ये स्कीम है स्कॉलरशिप स्कीम डिसेबल्ड के लिए, ये 100% स्टेट की स्कीम है। स्टेट की स्कीम के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 40% एंड अबाउट डिसेबिलिटी होनी चाहिए। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए है, इनमें हम 8th क्लास तक बच्चों को 2400 रुपये पर साल देते हैं और 8 से अबव को जो है 3600 रुपये देते हैं। और पेरेंट्स की जो इनकम है 60,000 पर एनम से कम होनी चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये हमारा बजट साल का करीब 180 लाख का है। जो पैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्ट खाते में, बच्चे के खाते में ये जाता है। और ये स्कॉलरशिप में थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने रखा हुआ है कि बच्चों के 40% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद हम इस स्कीम का फायदा देते हैं। नेक्स्ट। दूसरा गर्ल्स के लिए, क्योंकि रूरल एरियाज में क्या होता है कि लड़कियों को कई बार पढ़ने के लिए नहीं भेजते या कुछ क्लास तक पढ़ाते फिर रोक लेते हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम गर्ल्स की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए की है। इसमें हम वही अगेन द एलिजिबिलिटी 40% डिसेबिलिटी, 2500 रुपये पर साल अप टू 10th क्लास तक, और 10th से ऊपर 3000 रुपये देते हैं। अगेन द क्राइटेरिया 60,000 इनकम का है। और इसका हमारा जो 70 लाख का बजट जो है ये सरकार ने रखा हुआ है। और अटेंडेंस इसमें 70% होना चाहिए, क्योंकि ये अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, गर्ल्स के अटेंडेंस के लिए है, तो इसमें अटेंडेंस हम कंपलसरी देखते हैं। नेक्स्ट। पंजाब सरकार ने जो पीडब्ल्यूडी जो है उसको बसों में ट्रेवलिंग में भी कंसेशन दिया है, उसके लिए हमने 11 करोड़ का हमारा बजट है। और इसमें जो ब्लाइंड है उसको 100% कंसेशन देते हैं, और ब्लाइंड के अलावा जो है उसको 50% बस में कंसेशन है जो सरकारी बसें हैं। नेक्स्ट। ऐसी डिटेक्ट विक्टिम्स उसको हम 8,000 रुपये पर मंथ देते हैं, ये हमारी पंजाब सरकार की स्कीम है। नेक्स्ट। एक रीजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर, ये बड़ा सरकार का बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। इसमें मोहाली में हमने एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया हुआ है, और सेंटर की इम्पोर्टेंस आप इसी बात से देख सकते हो, जो सेक्टर के जो इंचार्ज हैं जिनको हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोलते हैं, डॉक्टर राज बहादुर जी, बड़े फेमस रिनाउंड जो है स्पाइन के सर्जन है नॉर्थ इंडिया के, वो बिना किसी ऑनरेरियम के इसमें सेवा देते हैं। यहाँ इस सेंटर में हमने अभी तक 4,21,000 पेशेंट्स जो है वो उनको ओपीडी फैसिलिटी दी है, और 6,000 मेजर और 25,000 माइनर सर्जरी डॉक्टर राज बहादुर जी के सुपरविजन में की हैं। नेक्स्ट। जो शिपड़ा स्टेट सेंटर की है उसी तर्ज पे हमने स्टेट की भी एक स्कीम बनाई हुई है। इसमें हम जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको बैरियर फ्री करने के लिए 50 करोड़ रुपए हमने जो बजट इसका रखा हुआ है, और ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। सहयोग हाफवे होम, 4 होम जो है पंजाब सरकार के हैं, एक अमृतसर कपूरथला में जो एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स के लिए है, लुधियाना और राजपुरा में मेल के लिए है। इसमें हम पेरेंट्स की इनकम 36,000 पर एनम देखते हैं, और इसमें इन चारों सेंटर में अभी तक हमारे 129 जो है जो इनमेट्स रह रहे हैं, और बजट है 11.34 करोड़ का एक साल का। नेक्स्ट। पंजाब सरकार ने डिसेबिलिटी जो है उसको
खासकर उस पर फोकस करने के लिए एक स्पेशल सेल और जो है 2022 में अभी बनाया है जनवरी, इसमें जुलाई में। इसमें एक सिंगल विंडो एक प्लेटफार्म है, उसमें कोई भी डिसेबल पर्सन है, उसको किसी तरह की कंप्लेंट हो, किसी तरह की शिकायत हो या किसी स्कीम का फायदा लेना हो, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो वहाँ पर अप्रोच कर सकता है। एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड टीम एक डिप्टी डायरेक्टर के अंडर में वहाँ हमने बिठाई हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ जो PWDs का जो है काम देखती है। नेक्स्ट, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज जो हैं हमने पंजाब सरकार के लेवल पे की हुई हैं। उसमें एक तो स्टेट रूल्स जो हैं हमने नोटिफाई कर दिए, जैसे कि डायरेक्शन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एक जो RPWD एक्ट, पहले क्या था कि वो एक्ट इंग्लिश में है, समझ में नहीं आते PWDs को, तो हमने उसको पंजाबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है। अगेन हमारा जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है उसमें रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया है। उसमें ये जो 4 तरह की डिसेबिलिटीज है, लोकोमोटर, हियरिंग, इंटेलेक्चुअल एंड विजुअल डिसेबिलिटीज के बारे में वो रिसर्च करते हैं और जो ट्रेनिंग जो भी लेना चाहे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जो है पंजाब सरकार में जो गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि जो ट्रांसफर रिलेटेड इश्यू है कि 1 का ट्रांसफर था 25 का ट्रांसफर होकर आया, और इसी तरह जो रिजर्वेशन है 4% रिजर्वेशन पंजाब सरकार ने किया है। पर वो ये है कि रिजर्वेशन हो या ट्रांसफर इश्यूज हो या बैकलॉग वैकेंसी हो, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने काम में, मतलब उनके लिए ये प्रायोरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट PWDs की नहीं रहती, तो वो बैकलॉग रह जाता है या उनको जो जितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए उतना नहीं दे पाते। तो हमने एक स्पेशल ड्राइव चला के ये जो बैकलॉग में सारे हमने 794 वैकेंसी जो निकली थी वो हमने उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो रिक्रूटमेंट 678 हो गई, बाकी अंडर प्रोसेस है। और स्पेशल ड्राइव जो रोस्टर रजिस्टर जो होता है हर एक डिपार्टमेंट जो प्रमोशन का, उसको स्पेशली हमने चेक कराया कि इसको चेक करो कि बैकलॉग इनकी प्रमोशन का कोई रह तो नहीं रहा। रिटायरमेंट एज पंजाब सरकार ने सभी की 58 है, PWDs की 60 की हुई है। एक हमारा जो PWDs के लिए अहम काम सरकार ने किया हुआ है। आगे चलिए, ये इश्यू, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं ऑलरेडी पहले बता चुका कि भाई रिटायरमेंट एज रिलेटेड, रिटायरमेंट एज 31 तारीख की बात है। अगेन जो वो सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, 31/8 की बात है। हमारे पास दो डिप्टी डायरेक्टर ने अप्रोच किया, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थे। 58 ईयर में उनको रिटायरमेंट ऐड कीजिए, आज हमें रिटायर कर देंगे। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो कंसर्न कॉर्पोरेशन को लिखा हुआ था, एक तो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय थे, एक रूरल डेवलपमेंट के थे, कि जी इनकी 60 है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, आप करिए। फिर भी उनको रिटायरमेंट का ऑर्डर जो है उनका टाइप हो रहा था, वो उन्होंने हमको अप्रोच किया कमीशन डिसेबिलिटी को, तो ऑफिसर्स को हमने समन किया और उसी दिन उनकी एक्सटेंशन 58 से 60 हो गई। इससे ये था कि जो डिपार्टमेंट, ठीक है आज हम सेंसिटाइज हैं, पर जब अब सारे लोग अपन जाके काम करेंगे तो हम सबको और डिपार्टमेंट्स को सेंसिटाइज करना है और जो PWD के लिए पॉलिसी है उनको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कराना है। नहीं पीछे करो। 200 हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ट्रेनिंग दी हुई है और इसमें एक्सपर्ट किया हुआ है। तो ये जो PWDs के लिए एक बहुत बड़ा अहम काम पंजाब सरकार की तरफ से किया हुआ है। CSR फंड्स में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की तरफ से हमने डिस्ट्रिक्ट लुधियाना और जालंधर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हैं PWDs के लिए। एक एम्बुलेंस भी जो हमने जो सहयोग जो होम है उनके लिए CSR से हमने लेके वो PWDs के लिए रखी हुई है। UDID कार्ड के लिए हमने इनको मोटिवेट करके, जो PWDs को मोटिवेट करने के लिए रेडियो पे ये हर एक दिन में जो 8 टाइम्स हम इसको ब्रॉडकास्ट करवाते हैं ताकि वो लोग जो है उनमें अवेयरनेस हो और इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। इसके अलावा हमने जो 105 हॉस्पिटल्स हैं उनको जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी मैपिंग करके पोर्टल से उनको लिंक किया है फॉर PWDs के लिए। और इन हॉस्पिटल्स में एक वीक में 2 दिन एक्सक्लूसिवली PWDs के लिए, UDID कार्ड्स के लिए और जो भी उनकी जिस तरह की भी हेल्प चाहिए उसके लिए हमने रखे हुए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से एक पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना लागू की है। इसमें हम क्या करते हैं कि ठीक है ये जो डिपार्टमेंट सोशल सिक्योरिटी का तो करता ही है, इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी ये डायरेक्शन करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि जो उनकी स्कीम्स है उसमें PWDs को पहल दी जाए। और उस पहल का रिजल्ट ये है कि जो स्किल डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है
उसने जो और लोगों के साथ साथ इस साल में 497 पीडब्ल्यूडीज को ट्रेनिंग दी है। सीएसआर से जो प्राइवेट जो हमने 2 जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, उसके अलावा हमने 3 जो है होशियारपुर, बठिंडा और लुधियाना में पंजाब सरकार ने डेवलप किए हैं। उसमें करीब 50-60 करोड़ रुपए का जो हमारा खर्चा है, और उसमें जो लुधियाना वाला है एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स है। इसमें कंप्यूटर की, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, कैंडल मेकिंग, जो भी, ताकि वो अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग, अपना जो खुद का जो है रोजगार चला से, उससे ट्रेनिंग देते हैं। एडिप्स जो स्कीम है उसमें पंजाब में एक साल में पूरे सभी जिले कवर करके अलिम्को की हेल्प से 230 सेंटर्स जो वो अपने जो कैंप्स हमने ऑर्गेनाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट में किए हैं, और वो कंटिन्यूसली जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा 8 जिलों में डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर सेटअप कर दिए हैं, बाकी हर एक जिले में करने हैं। मैं खत्म हो गया। फ्यूचर प्लान्स, लास्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट। फ्यूचर प्लान्स, हम जो कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी की जो कोर्ट्स की हियरिंग होती है, उसमें देखा कि पूरे स्टेट से जो है ना डिसेबल, क्योंकि आना पड़ता है, जो कंप्लेनेंट है उसको भी सुनना पड़ता है क्या है, जो ऑफिसर्स को समन करते हैं फिर उसको करते हैं। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि मोबाइल कोर्ट्स जो है कमिश्नर डिसेबिलिटी का चले, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके, और जैसे शुरू में 3-4 डिस्ट्रिक्ट का एक जगह रख ले, ताकि लोगों को जो है दूर दूर से चल के स्टेट कैपिटल पे ना आना पड़े, और मोबाइल कोर्ट से उनकी प्रॉब्लम का जो है वहाँ पे निदान हो जाए। और उसके अलावा वीसी के थ्रू भी हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो कमिश्नर डिसेबिलिटी की हियरिंग हो जाए। एक स्पोर्ट्स सेंटर पंजाब सरकार एक्सक्लूसिवली फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए मोहाली में सेटअप करने जा रही है। बाकी हाफ ए होम्स का हम अपग्रेडेशन वगैरह सारा कर रहे हैं। जो मैंने पहले बताया था कि पंजाब सरकार की स्कीम है पीडब्ल्यूडीज के लिए बसों में फ्री ट्रैवल की, तो विजुअली जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 100% कंसेशन है, पर क्योंकि उनको साथ में एक अटेंडेंट लेके जाना है, हम अटेंडेंट को भी फ्री करने वाले हैं। ये भी हमारा अंडर प्रोसेस चल रहा है। बाकी थैंक यू। I request you, sir, please be on the dais. The house is open for questions or suggestions, if any, please. I would again request Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar ji, to kindly felicitate the presenter, Shri Sumer Singh Gurjar ji, Social Security, Women and Child Development from Punjab. Hello. Okay, we'll take a question also. Sir, it's not a question, it's a kind of a request. Sir, since yesterday we are talking about the Kiran Mental Health Helpline. And sir, NIMHR सीहोर जो है वो पंजाब और राजस्थान के स्टेट्स की कॉल को डील करता है। एंड लगभग पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि पंजाब से हमारे पास बहुत कम कॉल्स हैं सर। और अगर ICMR की स्टडी देखी जाती है तो एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस राजस्थान से ज़्यादा पंजाब में हैं। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्पलाइन को प्रमोट करने के लिए सर सहयोग करें। ठीक है, करा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवियों और सज्जनों, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री महोदया कुमारी प्रतिमा भौमिक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैडम, आपका पुनः इस कार्यशाला में स्वागत है। I would like to take the opportunity to now invite Dr. Siddharth Shiv Jaiswal sir, Director Social Welfare from Tripura, to kindly start his presentation. Respected dignitaries on the dais, other dignitaries in the hall, dear colleagues, a very good morning to all of you. At the outset, I would like to thank the ministry for giving the state an opportunity to highlight the best practices. As such, the government of Tripura is taking many initiatives for empowerment of persons with disabilities. However, in this presentation, we will be focusing in the next 5 to 7 minutes about the special drive which we are taking for generation of UDID cards. And towards the end, in brief, we will be discussing the
other initiatives of the state government for the empowerment of persons with disabilities. Next. Next. ओके तो सबसे पहले यूडीआईडी जनरेशन में जो इश्यूज हम लोगों को फेस होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अवेयरनेस की अभी भी कमी है फील्ड में। जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनको अभी भी इस स्कीम के बारे में पूरी तरीके से सूचना नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है एक्सेसिबिलिटी टू द DDRC। देयर आर टू रीजंस टू दिस। वन इज द वेरी नेचर ऑफ द हैंडीकैप which is faced by the persons with disabilities, the hurdles which they face in accessing the public transport is one hurdle. The next is the number of DDRCs in our country. जैसे कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पूरे देश में अभी 63 DDRCs के आसपास है, जो कि देखा जाए तो in compared to the total number of districts this number is very less. So it is possible that the DDRC is not available in the next district or in the nearby district. So the next reason for the UDID generation, the issue faced is the accessibility to DDRC. तीसरा जो इशू है जो कि बहुत ही एक्यूट है त्रिपुरा ऐसे राज्य में, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि त्रिपुरा राज्य में 3 स्टेट लेवल हॉस्पिटल्स हैं और तीनों स्टेट लेवल हॉस्पिटल्स जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी की सुविधा है वो तीनों अगरतला में उपस्थित हैं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लिमिटेड स्पेशलिटी ही उपलब्ध है। सो द स्पेशलिस्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी इज नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर कंडक्ट ऑफ कैंप्स। Number 4 is the multiple visit which is required by the person with disability to get his registration in the UDID and to get hold of the UDID card. And number 5th is the most important, many of the persons with disability themselves don't know that they are having such kind of disability unless and until the state takes active intervention of finding such kind of disabilities. तो हमने अपने राज्य में क्या किया, हमने एक स्क्रीनिंग कैंप कराया। स्क्रीनिंग कैंप में हम लोगों ने अपने जो राज्य में आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, आशा होती हैं, उनको प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग दी कि किस प्रकार से हम लोग डिसेबिलिटी को हम लोग पहचान सकते हैं। उनका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया कि यदि आपको किसी भी घर में इस प्रकार का यदि आपको कुछ हिस्ट्री में पता चलता है तो आपको इस फॉर्मेट में आपको डाटा कलेक्ट करना है। और उसके बाद उस ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने सभी का डोर टू डोर विजिट इंश्योर किया। कहने में ये बात बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल इन स्टेट ऑफ त्रिपुरा ऑन एन एवरेज ईच आंगनवाड़ी वर्कर कवर्स अ फैमिली ऑफ 45 to 50 only. So this task can be done very easily every year. So this exercise we got it done in the state, and thereafter we created a database of all those persons who were found to be having any such kind of disability in the preliminary survey, and based on that we compiled a village wise data, block wise data, subdivision wise data, and also the district wise data. Once we had the data with ourselves, we knew the area wise probable number of disabilities, which gave us a scientific and very objective criteria of holding our assessment camps, which took care of the disadvantage which we were facing in the availability of specialists. चूंकि हमारे पास स्पेशलिस्ट्स कम थे, हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, तो हम लोगों ने उनको अच्छे तरीके से डिप्लॉय करने के लिए उस डाटा का इस्तेमाल किया, और हमने उन एरियाज में कैंप्स किए जहां पे हमें लगा कि यहां पर हमें ज्यादा नंबर्स मिलेंगे। और वहां पे कैंप करने के साथ साथ हम लोगों ने यह भी इंश्योर किया कि जिन लोगों को हमें असेसमेंट करना है उनके ट्रांसपोर्ट की सुविधा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उनके ट्रांसपोर्ट की का अरेंजमेंट कराया, और छोटी छोटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का भी अरेंजमेंट कराया, जैसे कि उनके खाने का इंतज़ाम, उनके जब वो लोग रेस्ट करेंगे तो उनके टॉयलेट्स का इंतज़ाम, ये सारे इंतज़ाम हमने कराए। और उसके बाद साथ ही साथ में ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने स्पेशलिस्ट का भी ख्याल रखें। सो वी मेड प्रॉपर स्टे अरेंजमेंट्स एंड प्रॉपर एकोमोडेशन एंड ट्रैवल अरेंजमेंट्स फॉर आवर स्पेशलिस्ट ऑल्सो,
and at the same time we arranged for the collection of the documents from the persons who were coming for the assessment. So this is the outcome. This is the outcome which we achieved in the last 3 months. So total we could identify 39,910 persons in the preliminary survey. For information of everyone in this hall, this is more than 1% of the population of the state as per census 2011 data. As per census 2011 data, the population of the state is 36 lakhs. Number of assessment camps which have been held is 109, and during this short period of 3 months only, we have generated 10,722 new UDID cards, and the cumulative achievement is 30,321, which comes to around 0.86% of the state population as per census data. The benefits इस एक्सरसाइज की वजह से ही हमें UDID के बारे में और उससे रिलेटेड बाकी सारी जितने भी स्कीम्स हैं उसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड कर पाएँ अमंग द कम्युनिटीज़, अमंग द ऑफिसर्स, अमंग एवरीवन, अमंग द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. उसके अलावा हमें एक ऐसा डाटाबेस मिल गया जिसका हम लोग इस्तेमाल बाकी सारे स्कीम्स के साथ भी कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग अपने स्टेट में वी हैव इंक्रीज द पेंशन अमाउंट टू 2,000 रुपीज़ पर बेनिफिशियरी पर मंथ, एंड द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी form quite a substantial portion of the beneficiaries for our social pension schemes. So this database can also be utilized to cross check the pension which we are giving to our beneficiaries every month. Most important point here is minimal financial involvement. हमने भारत सरकार से इसके लिए कोई मदद नहीं मांगी. भारत सरकार ने जो भी हमें अवेयरनेस के लिए जो पैसा हमें पहले दिया हुआ था 1 लाख रुपीस पर डिस्ट्रिक्ट, उसका हमने इस्तेमाल किया. और उसके अलावा जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो सिमिलर स्कीम्स के अदर डिपार्टमेंट्स के जो रिसोर्सेज थे, जैसे कि NHM का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, RBSK का हम लोगों ने फंड यूटिलाइजेशन किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ फंड होता है उसको हमने इस्तेमाल किया, हम लोगों ने MP लैड का फंड इस्तेमाल किया, MLA लैड का फंड इस्तेमाल किया. तो एक ओवरऑल एक स्कीम्स को कन्वर्ज करके हम लोगों ने जो भी आउटकम हम लोगों ने अचीव किया पिछले 3 महीनों में, दैट हैज कम विदाउट एनी मच financial involvement. And the best part of this was the doorstep delivery of services. As we know that the persons with disability as such face so many problems in accessing those services, so it is our responsibility that we deliver those services closer to their homes. So this is one of our the drives, and I am very hopeful that in the times to come, in the next 6 months, 7 months, we are hoping that we will be able to achieve the target of having at least 2% of the population covered under the UDID. Our ambitions are high, but we are hoping, and we are getting good support from the district administration. We are getting good support from our public representatives. Our Minister of State is from Tripura. She is having regular review on this. We are having good support from the ministry, our secretary ma'am. We are hopeful that we will be able to do it. Just few issues related to UDID which I would like to highlight in this, on this platform. Unfortunately, I could not include it in the slide. First of all, ma'am, we are already having a database of the persons with disabilities in the form of UDID. If we can have a MIS report, village wise, block wise, district wise MIS report of the persons with disability. Secondly, ma'am, the category wise MIS report of the persons with disability, that will help not just the Department of Social Welfare but other departments also to extend the services. Third, ma'am, as far as I know, ma'am, there is no facility for migration of the persons with disability. If they migrate from one place to another, I would just like to suggest that this can be incorporated there, ma'am. My last issue from our state is in 2 districts, ma'am, Munakoti and North Tripura, since January 2017. There are certain applications. The list we have already shared with the ministry. Everything is done, ma'am. But the portal is showing that the UDID is in the process of printing. However, it has not yet been printed and not yet dispatched. So these such beneficiaries are eagerly waiting for the UDID cards, ma'am.
apart from that, ma'am, other good practices of the state, we have launched the Chief Minister Meritorious Award for PWDs, where we are giving 25,000 rupees for 10 meritorious students for class 10 and 54,000 rupees for 10 meritorious students for class 12. Similarly, we are also going to launch a state policy for empowerment of persons with disability, which is in the drafting stage, in the almost finalized, and very soon in the next 2-3 months we are going to launch that, ma'am. We are having as of now 4 DDRCs functional in our state. We are having 8 districts, but yesterday only ma'am shared with us that additional 4 have been sanctioned, so that we will be having 1 DDRC in each district, ma'am. We are having halfway home recently inaugurated, 25 bedded for female, 25 bedded for male in the state of Tripura for persons who have been cured from mental illnesses. One thing I would like to highlight here is, ma'am, हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं इन द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मैम. और मुझे यहाँ बताने में बहुत खुशी हो रही है, मैम, कि अभी जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मैम, पिछले वर्ष वो त्रिपुरा में आए थे, मैम, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फंक्शन में जो उनका फाउंडेशन का फंक्शन था, मैम, त्रिपुरा के पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को ही केवल इन्वाइट किया था, मैम. And they got so much impressed with the performance of these children, Divyangjan children from Tripura, that immediately they had sanctioned a cash prize of 11,000 rupees to each student, ma'am. So we are giving special focus on promotion of cultural activities in those students, ma'am. Then we are having a provision of marriage grant of rupees 5,000 to couples where one person is a person with disability, 4% reservation in recruitment and promotion, and dedicated rest house for persons with disability in Agartala. These are some of the pictures where the Honorable MOS is taking a review meeting with all the DM and collectors through a video conference. This is another review meeting. This is the training of Anganwadi workers for door-to-door survey conducted by each district administration. This is the door-to-door survey by the Anganwadi worker and data collection in the prescribed format. UDID assessment camp by DDRC, the initial documentation part, and thereafter they will be subjected to the assessment by the specialists again. Then this is the Chief Minister Meritorious Award for persons with disabilities. This was a very emotional scene. The guardian of the parent was overwhelmed with the response of the government. This was held recently, and this is the recently inaugurated halfway home. This is one of the DDRCs where rehabilitation equipments are made. Thank you. I request you, sir, to kindly be on the dais, please. Thank you, Siddharth, for sharing the best practices and the initiatives that have been taken by the state. I think our director, Vineet Singhal, will be able to answer your queries on Tripura. And I believe we can always share the data. And the problem that has been indicated about 2 districts, where it is being shown as underprinting, whereas no login password ID has been given, that needs to be resolved within a week. I'm sorry it never came to my notice, otherwise we could have tried to resolve it earlier. Thank you, ma'am. जहाँ तक आपका ये जो है कल्चरल प्रोग्राम का, मैं ये भी बताना चाहूँगी सारे हाउस को कि हम लोग एक दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि हम रीजन वाइज अभी तक कर रहे हैं, जिसमें जो बच्चे हैं, ये दिव्यांग बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है. अभी रिसेंटली हमने मुंबई में किया था. हमारे प्रोग्राम्स हम और भी शेड्यूल कर रहे हैं. एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आपकी स्टेट के भी जो लोग हैं, जो NGOs के साथ जुड़कर इसमें अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं या वैसे भी करना चाहते हैं, सोलो परफॉर्मेंस भी है. इनफैक्ट हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, NIs में जो स्कूल्स चलते हैं वहाँ पे भी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. आई हैव सीन इट विद माई सेल्फ. तो इसमें मैं चाहूँगी कि इसमें भी जो हमारा दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है, उसमें भी आप लोग अपनी अपनी स्टेट से बढ़ चढ़ कर उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो हम लोगों को ये जो जिस उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं उस उद्देश्य को हम ज़रूर प्राप्त कर सकेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Sir, I would again request you to please come on to the dais. मेरा माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से पुनः अनुरोध कि वे कृपया डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जायसवाल जी का अभिनंदन करें.
आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सभी ने निवेदन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर गोवा श्री सुभाष फल देसाई जी को कि वे कृपया अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। Namaskar. Very good morning to all the Honorable Minister for Social Justice, Dr. Virendra Kumar ji, Adaraniya MOS, Madam Pratima ji, the Honorable Minister of Government of Punjab, the Secretary Mrs. Anjali Bhavra ji, all the Additional Secretary, Joint Secretary, all the officials who have come from various state Disability Commissioner, and my dear friend. The Government of Goa Director of Social Welfare has established a special cell for empowerment of persons with disabilities in order to cater the needs of special children, and in this sector to give them the comforts, to give them the social empowerment, physical empowerment, educational empowerment, economic empowerment, and to look after the issue of non-discrimination, equality, protection from the abuse, violence, cruelty, and all as per the act what is required by the state, and to take care of, good care of, and to give a good comfort and a very dignified life, this special cell is made. Friends, I'll introduce some of these salient features and initiatives taken by the government of Goa. The Goa state is a very small state having 2 districts and a population of around 14 lakhs, and in the survey which was made in 2011, we found something around 36,000 disabled persons, but now it has been increased. Based on the RPW Act 2016, Goa State has notified and published all these rules and all by 2018 and further superseded in 2020 and amended again in 2021. The government of Goa having unique scheme under Directorate of Education, that is Children with Special Needs, wherein special education, counseling, physiotherapy services have been provided and salary grants have been provided to the teachers by this scheme. All those schools, even the private schools and the government schools, all the most of the infrastructure and the salary grants for the teachers has been taken care by the government. The state of Goa has appointed independent state commissioner for the persons with disability along with regular staff and infrastructure in its own independent premises. This has expedited the pending cases in regards of Accessible India campaign. In the state Goa, we have so far done 75% of the civil work in 30 buildings identified in the first phase, and we are eligible for the second installment now, and we have identified another 45 government buildings which are in the cities and which are accessed by the disabled persons frequently. So this job we are going to take up very soon. The Goa state offers one of the highest pension amount for the persons with disability. For 90% and above disabilities, the government of Goa gives 3,500 per month assistance. The children with disabilities and are below 18 years of age, the government provide 2,500 per month. The person with disability is normal, they get at least 2,000 rupees, all those who have got 40% disabilities. Notifications and circulars pertaining to RPW Act 2016 as per sections are issued timely. One of the objectives of the state scheme is to provide financial assistance
we have a formulated scheme by name Dayanand Social Security Scheme for pension with disabilities. Apart from this scheme is meant for all the citizens who are above 60, who are disabled and who are widows. And to take care of this, we have a special scheme for this and for disabled also. The applicant must be bona fide resident of state and domicile of 15 years is required. The applicant should not be receiving any other assistance. Benefit under this scheme is 2,000. This is I have already mentioned. Let us move to the next stipend to the students with disabilities. We have introduced the scheme of providing stipend to all the disabled children. From 1st to 5th, it is 200. Besides this, we have a separate scheme which government takes care. Is from 5th to 8th, it is always of 400 above, 400 and 500. The children from this sector also can apply for this. In addition to that scheme, we have 1st to 4th 200 per month, 5th to 8th 200 per month, 9th to 12th it is 300, and besides the other benefits. The objective of this the scheme for the scholarship to the students with disabilities, we have a special scheme. The objective of this scheme is to assist children with disabilities. The rate of scholarship for different courses of studies like 9 to 12, it is 500 per month. BA, BCom, BSc and graduation in any stream, it is 650 per month. Postgraduate and other professional courses, it is 900 per month. The hours for marriage with the person with disabilities, this is a special scheme that we have introduced. Our government has introduced a normal person when he gets married to a disabled, then and if they stay together for at least 2 years, in the 3rd year they can apply for, that couple can apply and they get 50,000 rupees government benefit. Grant of financial assistance to person with severe disabilities. The quarterly, the government of Goa has introduced a scheme and they deposit, the government deposits 20,000 rupees in a fixed deposit in the bank, and quarterly interest is being transferred to their personal account so that they can sustain, and at the end of 10th year they can withdraw it if they wish. The scheme for state awards for the welfare of persons with disabilities. Under this scheme, every year on 19th December, this being a liberation day for the Goa. Goa was not liberated in 1947. It got liberation in 19 December 1961. On this day, we choose all those disabled Divyangjan who are working, and if the performance is very good, then 3 of the such employees, performing employees, get an award of 25,000 and a special, and mostly it has been handed over by the Honorable Chief Minister in a special function. The best employer who gives the employment to disabled person is awarded with 25,000. The best NGO who caters to the needs of the disabled gets award of 25,000. The best block who's catering to the needs of the disabled gets 25,000. The scheme for setting up accessible library and visually challenged person. This is a very interesting scheme here. Probably most of the states will not have it. The scheme is for setting up a braille library and shall be owned. This scheme can be availed by any NGO having a owned or a rented organization, at least 50 square meters of area, and the scheme is financial assistance of rupees 15 lakhs has been given to this NGO to get all the infrastructure done, plus 50,000 rupees for purchase of cupboards and all furniture, 20,000 per month honorarium to the assistant librarian who is taking care of that unit, 15,000 per month honorarium for the attendant cum sweeper, rupees 15,000 per month rent for urban areas. If the premise is within urban areas, 15,000 rupees of per month rent, and rupees 12,000 per month rent in the rural areas. 20% of rent shall be granted as maintenance charges. This is a good scheme. Scheme to provide financial assistance to NGOs for running daycare center for the disabled
This we call it as Jivan Jyot. Rupees 3 lakhs are provided to NGOs for the first year. When they start on this, any NGOs having such premise, they can go in for this daycare center. Honorarium to superintendent manager, yearly 60,000 rupees is been given to the NGO who takes up this daycare center. The caretaker Aya again will be paid around 36,000 per annum. Helper to assist the caretaker is being paid 24,000 per annum. Rent of 60,000 per annum, and recreation, books, games and all other infrastructure 10,000 per annum. Miscellaneous electricity, everything is been paid by the government, 24,000 for such purpose. Tea, snacks 36,000 per annum. The next scheme is scheme to provide grants for setting up of physiotherapy center. The scheme is implemented for NGOs for benefit of disabled person. The NGO should be registered with the Director of Social Welfare. The special school should be recognized by the Directorate of this. And the assistance of rupees 5 lakhs is provided under this scheme, plus rupees 5,000 per month to a physiotherapist who is looking after, who is taking care, or occupational therapist, or a yoga instructor. Rupees 3,000 per annum per month is for a sweeper. So this is a good scheme again. Major programs conducted by Office of the State Commissioner for the Persons with Disabilities. Sensitization and awareness program. For time to time we take up these programs throughout the year. Every month you will find 2-3 programs across Goa. And we have a public transport system run by government, and we found that in the governments they don't get good treatment for these disabled person. So we had conducted a sensitization program, and all those drivers and conductors who are running the bus services, they have been put, and 800 Kadamba transport drivers and conductors who have been trained. Awareness and sensitization program for inclusive education we have conducted, and we called all the school headmasters, principals or the management. Around 1,400 heads of schools were called, and they were given the training how to handle and how to make the education inclusive for all those. And the government is thinking of giving a special educator or a trained teacher to all these schools who are catering to the needs of disabled student. Awareness programs are being conducted, and even the High Court staff is has taken the initiative, and they asked for a camp, and we did it. UDID camp at all talukas are being conducted, and we get a good response. Initial stage we were lagging behind, but when I took up the responsibility of this department, we regularly conduct, and we have little bit problem which I yesterday declared that we need a empanelment of private hospitals, because the government doctors which they cannot take up because of their busy and loaded this thing. Sensitization, some of the photographs you could see that the drivers of public transport were called for this. The Honorable Minister for this, we were addressing all this awareness and sensitization program for heads of the schools and colleges. Honorable Minister, Chief Minister Dr. Pramod Sawant addressing time to time to all the participants, UDID camps which were held across the Goa. The slide, Honorable myself, with all the disabled, whenever we give them the aids and appliances, the sensitization workshop at High Court Mumbai, distribution of orthotic devices. Then Government of Goa have recently started Autism Intervention Unit, Caregivers Skills Training Program, and it gives me, we have also 2 implant hospitals which are been empaneled by the government. In the government public transport system, all those disabled will have a free transport facility.
not concession. Everybody will have, all those who are carrying card, they will have a free transport facility to move around. My special request now and invite, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि इस समय पे यहाँ पे सभी स्टेट्स के सभी ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, और वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पर्पल फेस्ट, अ फेस्टिवल फॉर द दिव्यांगजन, and which is going to be held at Panjim at on 6th, 7th and 8th of January. And I would request and I would invite all the participants, approximately the footfall of 5,000 we are expecting, and at least more than 500 disables will perform in every field. We will be organizing cultural programs performed by Divyangjans, and entertainment facilities all around, the sports facilities and water sports, and all sort of things a normal child does usually will have, the Divyangjans will have access to all this. This is a 3 days good festival which is being organized in the ESG complex, Entertainment Society of Goa, wherein international film festivals are regularly held. And I was organizer for all these years of International Film Festival, and I have a good knowledge and experience about this. And let us make, with all your cooperation, let us make this function a big event, which is not so far. I think this is not just for, let me tell you, this is not just for the Divyangjans. Along with them, we are going to have, get the participation from the children from various schools. We will participate and we will play, and who will enjoy, and who will get the entertainment from all this, so that they will have a feel that we are a part of this society and there is no discrimination, there is a equality, and we have access to every sports or every education facility that is being provided to normal children. So this would be altogether a different kind of festival, and we would like every state to participate with their participants. And the government, I would request the Honorable Minister Virendra Kumar ji to provide us some financial assistance. We are anyway organizing it, and the government of Goa has ensured good support to this cause. And I expect on these lines the Union Ministry should come forward and have a partnership with this for a good cause. And once again, I am very grateful for giving me this opportunity to present the state initiatives in front of this. And whatever I have learned in these 2 days, it is enormous, and we will go back, and wherever we have a shortfall and wherever we can do the activities. We have seen the different states who have participated and given their initiatives. We could come up with different ideas and make the life of all our Divyangjans a very comfortable and very honored and very dignified. Thank you very much, sir. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय. The house is open for any submissions or suggestions or any query, please. Sir, Goa is earlier also doing very well. My one only humble request and suggestion that all the schemes, programs you are implementing, and in North Goa, South Goa, and whatever be the few more districts are there, can you direct the concerned DC or DMs that they should hold the local level committee meetings under the National Trust Act and kindly send us the digitalized data for the year 1999 to 2015, as well as from 2016 to 2000 onwards. We have already approached all the DCDMs, especially we done webinars also for Goa especially. So because Honorable Minister is here, so it's my humble request. I am Umesh Kumar Shukla, Program Director, National Trust. So this is my humble request. Can, if you issue the directions or do your DCDMs of your state. So thank you, sir. सर मैं एक
30 सेकंड लूँगी। मिस्टर शुक्ला ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज़ किया है, ये हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए। हमारा जो DPWD डिपार्टमेंट है, एक एक्ट है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसमें कि हम 4 जो डिसेबिलिटीज़ हैं सिर्फ उन्हीं को हैंडल करते हैं, जिसमें कि आपका आ जाता है ये ऑटिज़म आ जाता है, आपका सेरेब्रल पैल्सी आ जाता है, आपका मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, उसमें 4 डिफाइन की गई हैं जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ से ही कनेक्टेड हैं। सर उसी एक्ट में जो अभी LLC की बात करी है इन्होंने, वो मैं सबके संज्ञान में लाने के लिए दोहराना चाहूँगी कि नेशनल ट्रस्ट की तरफ से इन लोगों को एक लोकल गार्जियन के लिए, बेसिकली यही 4 डिसेबिलिटीज़ के लिए लोकल गार्जियन बनाने के लिए एक LLCs का गठन किया गया है। आज जब सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये बात जैसे शुक्ला जी ने कही है, सर गोवा का आपके ध्यान में लेकर आए हैं कि वहाँ पे मीटिंग रेगुलरली हो, अभी तक हमारे पास 53,000 लोकल गार्जियंस जो हैं वो हमारे से जुड़े हैं, और ये एक फैसिलिटी है फॉर दीज 4 डिसेबिलिटीज़ ओनली, जहाँ पे लोकल लेवल कमिटीज़ बनी है अंडर DMs। इनकी मीटिंग्स जो है अगर आप रेगुलरली कराते हैं, देन वी आर क्रिएटिंग एन ईज ऑफ लिविंग फॉर पर्सन सफरिंग विद दीज डिसेबिलिटीज़। सो एक नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, उसके बारे में हमें मौका नहीं मिला यहाँ पे बताने का, बट एक उसका लीगल एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं सबसे कहूँगी कि इसको एक बार ज़रूर रिव्यू करें। जब हम कह रहे हैं कि 770 LLCs बनी है, इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री आर कवर्ड। So I'll request all the state commissioners and state representatives to kindly review this also. Thank you. Thank you so much, ma'am. I once again humbly request Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumarji, to kindly felicitate Honorable Minister of Social Welfare Goa, Shri Subhash Baldesai ji. Thank you so much, sir. With this, ladies and gentlemen, we'll now have a short break for tea, and I would request all the delegates to collect back together here by 12 o'clock, please. Thank you so much. I would also like to request the representatives from Telangana and Meghalaya to
Yes, thank you. So the demographic status of Divyangjans in Chandigarh has been depicted in brief. We have about 14,796 as per the last census, out of which 59% are males and 41% are females. These are the basic ideas that I would touch upon: the accessibility of infrastructure, digital accessibility, public transport, the upskilling and education, the special infrastructure for intellectually disabled and mentally ill, the role of civil society, NGOs, the various social security schemes and employment and entrepreneurial support that we are providing, the ADIP scheme progress report of Chandigarh, vaccination drive, the facilitation camps that we have been organizing, and briefly about our helpline. When we speak about infrastructure access, under the Sugamya Bharat Abhiyan, in the first phase, 43 buildings were identified, out of which 39 buildings have already been made accessible as per the guidelines, and the remaining 4 will be completed by December this year. For phase 2, 32 buildings have been identified, out of which 29 buildings, the drawings have already been finalized and the work is expected to begin shortly. For phase 3 also, we have identified 31 more public buildings. We have also undertaken a survey to see as to total how many public buildings in Chandigarh are there, which is ongoing. We have also written to the governments of Punjab and Haryana for taking up the accessibility exercise in respect of the buildings which are under their control and not under the control of Chandigarh administration. These are some of the buildings we have. In the first phase, we have tried to focus on our Sampark centers, police stations, and various health and wellness centers, dispensaries as such. The Sampark centers, I would like to submit that they are a special initiative of Chandigarh administration, where all the services, whether it is the payment of electricity, telephone bills, etc., or other services which the disabled, the elderly, or the general population wants to access. So they are one-stop centers kind of initiative. So we have made all our Sampark centers accessible under Accessible India campaign. When we speak about digital accessibility, there is a list of 28 websites of Chandigarh administration which have been made accessible. We have also started the social audit of all these websites, and we have requested the general public to kindly try and access these websites, and in case they have any objections or suggestions, they can let us know. It was launched in the month of August, and by 24th September, we'll be closing the social audit and then taking corrective measures wherever required. In terms of public transportation, there are 39 low-floor buses and 289 semi-low-floor buses, which makes up for approximately 65% of the total fleet, which has been made accessible for Divyangjans. Then the administration has also notified free travel facility in the Chandigarh Transport Undertaking buses within the Tri-City area on production of UDID cards. We have also written to them, initially they are providing this service for UDID card holders of Chandigarh only. We have requested them that the people from Tri-City area, at least that is Mohali and Panchkula, who are regularly plying through the city of Chandigarh, should be extended this benefit. Apart from this, there are dedicated roadside tracks where the Divyangjans can easily transit using their wheelchairs and tricycles, and easy mobility and their safety, road safety is ensured. The basic infrastructure, that is the ISBT, Sector 17 and Sector 43, which are our major terminals, have been made completely accessible for hassle-free usage. So this is in brief a summary. Transportation, we are touching about 68% accessibility. We are working on enhancing that. Buildings, 91% have been, as identified, have been made accessible, and 87.5% of the websites have been made accessible. Then I would like to speak about GRID, which is the Government Rehabilitation Institute for Intellectual Disabilities. This is a center which has been running under the overall control of the Department of Psychiatry, Government Medical College, Chandigarh. The services being provided here have been listed. This center has been working for intellectual disabilities and has been doing some wonderful work.
There is a halfway home also which has been set up here since 2020, and group home is also going to be set up shortly. It is covering the population not only from Chandigarh but people from the neighboring areas of Punjab and Haryana also. These are the details of our halfway home and group home facilities. The halfway home is a 10-bedded facility where residential psychosocial rehabilitation process, the pharmacotherapy, activities, vocational trainings, hobby classes, cognitive enhancement therapy, etc. are being undertaken. And this is sort of a process from where a person with mental illness can make a smooth transition from hospitals into their own homes and into the society. They can stay there for up to 18 months after their treatment. Then a group home is also being set up. It will have a capacity of 90 individuals, and the nodal department is the Department of Health. It is expected to be up and running by the end of next year. The role of civil societies and NGOs. In Chandigarh, there are a lot of active NGOs which are working for this, the cause of disability, and therefore the department has started a scheme wherein we are providing financial assistance to these voluntary organizations, trusts and NGOs for working in this field. Since 2018, the department has disbursed more than 2.59 crores to various stakeholders. These are the list of the major NGOs that are working in Chandigarh. The Soram Society works for over 150 children having developmental physical disabilities and mental disorders, providing academic and vocational services. Then there is the Chandigarh Spinal Rehabilitation Center, which is working for rehabilitation of persons with spinal cord brain injuries. Free of cost services are being provided, including stay. Institute for Blind has a school set up which is functioning very well. It has 163 visually impaired children. Then Sadhana Society and Ashraya Home. Ashraya Home is a government setup, and Sadhana Society is an NGO. They are working for children with intellectual disabilities, providing various kind of therapies and vocational trainings. Under the ADIP scheme, the department, these are the details of the camps that have been organized. In 2020, 328 beneficiaries were covered in association with Alimco, and in 2022, 432 people have been covered. They have been provided smartphones, tricycles, then for the blinds also aids and appliances have been provided. So more than 591 and 533 respectively have been provided in the 2 years. The social security schemes, there are three state schemes major. One is pensions, second is assistance for purchase of aids and appliances. This is in addition to the ADIP scheme. This is a UT scheme. Then there is a petrol and diesel subsidy scheme. In 2016, it was observed that there was a need to revise the guidelines. So in 2016, the family income criteria was revised upwards from 50,000 to 1,50,000, which has significantly increased the number of beneficiaries who can take benefit of these schemes now. The pensions were also enhanced from rupees 500 to rupees 1,000 and 2,000 respectively, based on the extent of disability. And the support which is provided for aids and appliances from the UT budget, that has been increased from 20,000 to 40,000 per appliance. Further, the petrol subsidy also was increased from a maximum limit of 20 litres up to 40 litres. Then speaking of employment and entrepreneurial support, the department is providing loans up to 25,000 to Divyangjans, and the loans are dispersed within 30 days. Apart from this, the allotment of booths have also been done dedicatedly for Divyangjans. A scheme was launched by the administration under which 84 booths have been allotted and 29 more are in the process. And these kiosks are run by the Divyangs at many prominent places across the city, giving them a voice, recognition and confidence. These are some of the kiosks which are being run by the Divyangjans.
Empowerment cum facilitation camps. The department regularly organizes various facilitation camps for Divyangjans, where all the departments come together, and services like registration for social security schemes, for UDID cards, for loans, for skill development programs being run by the administration as well as for the various NGOs, voter cards registration, etc. are being taken up. In this year alone, 32 such camps have been organized across Chandigarh, and approximately 6,500 Divyangjans have been facilitated and assisted under the various schemes. Then UDID cards, the total registered applications are 9,389. The total population is 14,796 as per the past census. Out of these, cards generated are 46.47% and dispatched are 44%. In the UDID registration, we are facing a little problem, ma'am. I would like to bring it to your notice. Ma'am, if there can be some coordination with the health ministry and they can give instructions to the various health departments to take up the identification and assessment exercises regularly and on priority. Ma'am, presently we are facing this challenge that only one day a week is being given and not more than 10-15 beneficiaries are being covered in assessment programs. So if there can be a dedicated doctor available in all hospitals, at least government hospitals, or there can be more time slots being given per week, I think we will be fast tracking the process of UDID registration, ma'am. This is just a brief on how we are trying to increase our coverage for UDID. We are engaging the Anganwadi workers. Then we are having joint camps of health and education, and we have given them timelines and targets. They have been working on that. Further, the areas which are not covered by the Anganwadi centers properly, we have also taken in the malaria wing of Department of Health, which goes around every monsoon, and the exercise is being undertaken by them for door-to-door identification of individuals who are Divyangjans and who do not have UDID cards. So we are hopeful that by the end of this year, we will be able to make significant progress in UDID registration. These are some of the glimpses of various camps for UDID registration. Then during COVID-19 in the year 2021, we have organized a special COVID-19 vaccination drive for elderly and Divyangjans. It was very popular. It was a 20-day long exercise, and we had provided pickup and drop facility to all Divyangjans to and fro from their doorsteps. Total 10,943 beneficiaries were given free of cost vaccinations at the government camps, and there were more than 22 vaccination centers. Then I would like to speak about the disability helpline. It has been functional for more than 5 years now. We are providing counseling services, legal guidance and support in case of abuse and police complaints. The helpline is very popular, and a lot of Divyangjans are taking benefit for various schemes and awareness under this. Thank you. Thank you so much, ma'am. Sir, you would like to make a question? Mic, please. Madam, you mentioned the family income. The Punjab government has increased from 50,000 to 1.50. Just I wanted to know what is the BPL income, BPL category family income for your Union Territory Chandigarh, because Punjab has BPL below poverty line. Actually, there are most of the schemes where the government is funding below poverty line people 100%. So in your particular Chandigarh, what is the criteria or any government order or anything by which we can determine this is a family income which covers below poverty line, something like that?
Sir, this is as per the National Food Security Act, and because we do not have any ration shops or ration card system in Chandigarh, there is 100% DBT. So therefore, we have aligned our assessment along with the NFSA, under which families up to 1,50,000 income are being covered for the benefits, and we have also taken up with the Ministry of Food and Supply also to clarify, because a lot of Government of India schemes are linked with the BPL. So we have been requesting them also from time to time to allow us to align it with NFSA, because we do not have the system of BPL anymore since the beginning of National Food Security Act in Chandigarh. So can you do something, because this is I think, sir, in Kevadia, Gujarat also I made a request, the representative who is coming for Chandigarh. So till date we have not received anything for that. So kindly we'll take it up. This matters. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मेरा पुनः नम्र निवेदन माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वे कृपया नितिका पवार जी को सम्मानित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। I would now take the opportunity to invite on the dais Dr. E. Ramesh Kumar Sir, Commissioner for Social Justice and Disabled Persons Welfare, Madhya Pradesh, to kindly start his presentation. मंचासीन माननीय मंत्री महोदया, माननीय राज्य मंत्री और गोवा से पधारे हुए मंत्री, माननीय सचिव महोदय और उपस्थित सभी साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको मध्य प्रदेश शासन और मेरे स्वयं की ओर से आप सबको मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड to have a 2-day symposium at Indore, Madhya Pradesh. Next. I would actually want to dwell on these 6 issues, majorly on UDID and briefly on the remaining 5 issues. First one, UDID. दूसरा जो बिंदु है वो शासकीय सेवा में आरक्षण 6% आरक्षण जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। तीसरा, पेंशन योजनाएं। चौथा, निःशक्त विवाह योजना। पांचवी, शिक्षा प्रोत्साहन योजना। और छठवीं, हमारा नया संचालनालय एवं स्टेट रिसोर्स सेंटर के संबंध में। नेक्स्ट, with regard to UDID, as you are all aware, I have a number of officers have already dwelt about this subject. सर्वप्रथम UDID जो है 2017 में प्रारंभ की गई केंद्रीय शासन द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य जो रखा गया वो ये है कि इसका एक एकत्रित राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना, टू हैव अ नेशनल डेटाबेस फॉर द पर्पस, प्रत्येक दिव्यांगजन के लिए एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करना, टू प्रोवाइड अ यूनिक आईडी कार्ड फॉर ईच एंड एवरी डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन, और यह कार्ड पूरा देश में मान्य हो, टू हैव अ नेशनल एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द नेशन, और and to be helpful in getting benefits from all other schemes. इसके अलावा इसका एक और आवश्यकता ये भी महसूस की गई कि पृथक पृथक दस्तावेज रखने का आवश्यकता ना हो, so that we can avoid having multiple forms and multiple formats. Next. Primarily Madhya Pradesh, we would say that we have been successful, or we have grown the
moved across onto the curve by achieving more than 95% of our target. That was possible because of a concerted effort on a multifold. Initially we have identified the stakeholders. जो stakeholders जो सहभागी है इस विषय में स्वास्थ्य विभाग और इसमें भी DMHO स्तर के अधिकारी या निचले स्तर के अधिकारी, जिला उपसंचालक सामाजिक न्याय DDRCs, स्थानीय निकाय NGOs और ग्राम पंचायत और वार्ड प्रभारी. With a lot of effort and concerted strategy, we could get all the stakeholders on board. Then जैसे हमने ये सहभागी को चयन किया गया, फिर इनका प्रशिक्षण का अलग राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर अलग अलग प्रशिक्षण का व्यवस्था की गई और प्रशिक्षण दी गई. इसके साथ ही साथ IEC में भी काफ़ी जोर दिया गया. Apart from the regular modes of IEC methodologies, the social media has been very effective for us in spreading the message across. Then राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर समय समय पर मॉनिटरिंग का व्यवस्था की गई, जिसमें राज्य स्तर पर हर प्रत्येक 15 दिन में हमारा पूरा प्रदेश के अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग की गई. We had a regular monitoring at every fortnight at state level. इसके अलावा एक डेली डैशबोर्ड भी तैयार की गई, जिसके तहत हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रत्येक जिले का ब्लॉक स्तर पर ब्लॉकवार उनका प्रगति के संबंध में समीक्षा करते रहें, जिसके वजह से इस अभियान को हम एक सकारात्मक रूप में लेके जा पाएँ. नेक्स्ट, इसका क्रियान्वयन और इसका आगे की कार्रवाई कैसे की गई. प्रप्रथम जो है, वी हैव बीन गिवन अ डाटाबेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ अबाउट 5.23 लाख बेनिफिशियरीज, और इसको अमल करने के लिए हमने लगभग 22,822 ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर हमने दिव्यांग सेंटर्स को चिन्हित किया गया. Identification of camps. Simultaneously, we have also identified, we have in fact established about 726 data uploading centers. इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से DDRCs के संबंध में जो समन्वय बैठी है, उसके वजह से ये सफल हो पाया. Finally, in the year 2017, we have been able to roll out this program successfully. Next. और इसी में भारत शासन द्वारा जो लक्ष्य हमें दी गई वो 6,60,313. इसके विरुद्ध हम लगभग 7,33,179 हितग्राहियों को हमने UDID कार्ड जारी किया. और मुझे कहने में हर्ष है कि पूरा देश का प्रथम UDID कार्ड मध्य प्रदेश से ही रोल आउट हुआ है 2017 में. इसके अलावा मिशन UDID का जो मिशन UDID 100 जो 100 दिवस का प्रोग्राम शासन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तय की गई, इसके तहत हमारे पास जो पूर्व में जो डाटा है समग्र का ID डाटा, उसको इससे मर्ज करके हमारा काम और थोड़ा सरल हुआ है. और जिन दिव्यांगजनों का मैपिंग नहीं हुई है, उनका प्रत्यक्ष से कैंप्स आयोजित करके कार्ड्स उपलब्ध कराए गए हैं. और अब एक पॉलिसी के तौर पर जो भी नया दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया जाना है, वह और जिस दिव्यांग जन को किसी भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है, उनके लिए UDID में दर्ज करना एक मैंडेटरी प्रक्रिया है. नेक्स्ट, आई जस्ट वांटेड टू शो यू सम ऑफ द फोटोज जो कैंप्स आयोजित की गई है. नेक्स्ट, जो मेडिकल कैंप्स आयोजित की गई है, जिसके तहत सर्टिफिकेट्स दिलाए गए. नेक्स्ट,
These are the IT cells that we have created in every district and also at the block level to enable and facilitate issuance of ID cards, and also that also helped us to deliver the ID cards also, UDID cards, to the beneficiaries. Next. And as I told you, we take pride in saying that Madhya Pradesh is the first state and the first UDID card from Government of India after the scheme has been launched, has been rolled out from Madhya Pradesh. Next. These are the three types of cards which we issue: the white striped ones for a disability of 0 to 39%, the yellow striped ones for 40 to 80%, और जो नीली रंग की जो है वो 80% से अधिक जो विकलांग है, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए है. नेक्स्ट. जो मैंने डेली डैशबोर्ड बताया ये इस तरह से है कि जो हमारा 52 जिले हैं, इन 52 जिलों को हम प्रतिदिन कितने आइडेंटिफिकेशन हुआ है, कितना कार्ड्स जारी की गई, इसका हम दैनिक प्रगति लेते हैं. तो इसके तहत हम जिलों को और जिलों में कलेक्टर्स और निचले के अमले के साथ चर्चा करने में हमें सुविधा होती रही. नेक्स्ट. एंड दिस इज अ स्टेटस ऑफ द डैशबोर्ड created by Government of India, and we are happy that we have will be able to take it much forward of all the new entrants. Next. कुछ सुझाव मेरे तरफ से हैं just to make it more dynamic, not that the present issue is anything bad. If we can just go back 2 slides. Can we go back 2 slides? Again, back. Yes. As I told you, we have rolled out the first UDID card from Madhya Pradesh, and if someone can actually closely observe it, the date of issue of this card actually says 18/7/2007. So there is, I am just pointing this issue only to say that this is the date of issue of the disability certificate to that individual. But unfortunately, we need to probably make a correction. The date of issue of this particular card is 2017. This needs a small technical correction needs to be done. We can go back to the future slides. Next. Yes. Then just to avoid duplicacy रोकने हेतु आधार कार्ड से इसको जितना जल्दी हम टैग करेंगे उतना व्यवस्थित होगी. The second one is data updation का सुविधा थोड़ा सा सरल करने का निश्चित आवश्यकता है. Then there are certain dynamic fields such as education, marital status, then employment status, that also need to be made more dynamic. और पोर्टल के लिए पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए मान्य किया जाना उचित होगा, जैसे अपन आधार कार्ड के लिए करते हैं. और समस्त योजनाओं में यूडीआईडी कार्ड धीरे धीरे अनिवार्य करना एक दैट इज अ ग्रेजुअल स्टेप वेयर वी हैव टू मूव ऑन टू. नेक्स्ट कमिंग टू द अदर इश्यू, जैसे आप जानते हैं कि जैसे रोजगार में हो या शिक्षा में हो 4% या 5%, not less than 5% is what it says. And I am glad to tell you that from ages, that is even from 1990s, Government of Madhya Pradesh is giving 6% reservation to the disabled in government jobs. But I have a suggestion here wherein the reservation, whether it is 4% or 6%, we actually make it as, I have categorized it to 4 categories: Drishti Badit, Shravan Badit, Asti Badit, and other disabilities, whether it is 1% each or 1.5% each. But the same is actually not carried on when it comes to reservation in educational institutions. There we give it as a wholesome picture of 5% or 6% or 4%. There is no classification or subcategorization with regard to various categories. I am just flagging it for the audience. Next. एक योजना और भी है राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं में से. मैं ये कहना चाहता हूं कि दिव्यांगता जो प्रतिशत है हम 80 के बजाय 40% देते हैं,
or BPL. In fact, one of our members has raised with regard to Chandigarh. For us, there is nothing like BPL or non-BPL. Every person who is disabled and he is greater than or equal to 6 years of age. There are certain schemes wherein even for 6%, 6 years of age, we give that pension. And there is a uniform rate of 600 rupees for all pensions for us. In this format, we actually benefit about 4,32,000 beneficiaries by way of almost with an expenditure on the exchequer of about 29.88 crores. लगभग 30 करोड़ के आसपास हम इस पर खर्चा करते हैं. नेक्स्ट, राज्य द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित बाकी और योजनाएं हैं जो बौद्धिक दिव्यांग के लिए आर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा प्रत्येक रूप से दिया जाता है, जिसके तहत हम 77,236 हितग्राहियों को हम लाभान्वित करते हैं 600 रुपये के मान से, और इसमें हमारा खर्चा लगभग 4.63 करोड़ है. नेक्स्ट, इसी तरह निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना एक राज्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक रूप से संचालित है, जिसके तहत दोनों दंपतियों में से किसी भी अगर एक व्यक्ति दिव्यांग हो तो हम 2 लाख रुपया उनका प्रोत्साहित करने के लिए देते हैं. और इसी तरह से अगर दोनों दंपतियों में दोनों अगर दिव्यांग हो तो उनके लिए 1 लाख रुपया हम देते हैं. और मुझे कहने में गर्व होती है कि पिछले 15 माह में हम लगभग 12 से 1300 इस तरह का हितग्राहियों को हम लाभान्वित कर पाए टू द ट्यून ऑफ अबाउट 22 करोड़ 67 लाख. Thank. Next, these are the photos ones. Next, in this photo, if you see the, in fact, the groom actually holds the bride on in his arms, and we can see the happiness on the face of them. It's actually, this scheme is a very popular scheme in this state. Next, दूसरा एक राज्य द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक और संचालित योजना है जो निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत 10वीं या ITI प्रवेश के लिए 50% दिव्यांग हो तो उनके लिए लैपटॉप दिया जाता है, और 60% से ज़्यादा दिव्यांग हो और अस्थिबाधित हो तो उनके लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल राज्य शासन द्वारा दी जाती है. नेक्स्ट, now we come to, this is our new state level resource center which has come up, and also it also has disability state level office. We also have a 250-seater auditorium, and I will be glad to host any event of the disability department at Bhopal without any encumbrances on anyone. Thank you so much. One of the slides you have shown Manda Buddhi, the word, maybe it is a part of the scheme. Please remove that. Yes. Because that is not. Understood. Take it. Thank you. The house is open for questions, if any, please. I would again like to request Honorable Minister Sir to kindly felicitate Dr. E. Ramesh Kumar Sir. Thank you so much, sir. I now invite Srimati Ganga D. Pradhan ma'am, Secretary Social Justice. Just a minute. I just wanted to add a small line, ma'am, out of the way. I am also happy to inform you that मैं पूर्व में इसी मंत्रालय में 2014 से 17 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने सेवा दिया. इसके अतिरिक्त और भी यह है कि 2008 से 12 तक मैं जिन 2 जिलों में कलेक्टर रहा हूँ, उन 2 जिलों में माननीय मंत्री जी सांसद रहे, तो आई हैव एन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग. थैंक यू. Thank you, sir. I now invite Srimati Ganga D. Pradhan ma'am, Secretary Social Justice, Empowerment and Welfare Department, Government of Sikkim. Ma'am, you may please start your presentation.
With the kind permission of the chair, Namaste, warm greetings from the state of Sikkim. The endeavor of my state government has been to ensure the best possible facilities and services covering all 21 disabilities for all age groups through information, education, communication, technology, and active public participation. We have a continuous program for identification, screening, issuance of disability certificates, and UDN ID enrollment, which we hopefully will reach the saturation by the end of the year. Next. We have, as I said earlier, continuous training processes for all stakeholders, awareness and networking at all levels through presentations on All India Radio, social media, and through various podcasts. There are many state innovative schemes. For example, the grant of award for marriage with a disabled person, rupees 2 lakhs, one-time grant. We have conveyance for all government employees at the rate of 1,000 per month. And we have the Chief Minister's disability pension at the rate of 1,500 rupees per month. And then the Indira Gandhi National Disability Pension, wherein the government of India gives 200 rupees and my state government gives 1,800 rupees. We have cash awards for disabilities, for students with disabilities, both in the pre-metric and the post-metric, rupees 50,000 and 35,000 respectively. Then we have reservations in the public transport system. We have grant in aid to various NGOs where there is specific budgetary allocations. This year we've covered 18 NGOs ensuring good governance. And we have not excluded transgenders in the larger interest of the community. And we have reservations in government job to the extent of 4%. And as I said, I've already, the scholarships have been mentioned in the next, in the slides up there. And we have a very vibrant DDRC. And in the next couple of months, we'll be starting 2 new DDRCs also. And our focus right now is to catch them young, aggressively monitor their development through constant assessment. And we are trying to create a resource directory for a vibrant database. And we have some very special schools, 3 special schools. We've tried to ensure, as the focus today is on the best practices and the success stories, we are trying to focus on child-friendly schools, colors, lights, gadgets. And there are 2 very important programs which has been recently rolled out by my state, the Amma Shashaktikaran Yojana, whereby the focus is on giving 20,000 assistance to all mothers. And here the one critical group is the disabled persons, disabled mothers. The rate of dispensation is 20,000 rupees, one-time assistance for enabling mothers to invest in their children, to invest in animal husbandry, and to invest in small micro enterprises. Then another very important program which has been rolled out recently is the Baini program. Baini means sister. So we are trying to target the little girls who are residing in our schools and promote menstrual hygiene. We are trying to ensure that they get organic sanitary napkins, and which is actually made by self-help groups in the local area, which is environmental friendly and very, very hygienic for the child. Next, in one of our special schools for the hearing impaired, we've tried to encourage Nutri Gardens also, Poshan Vatika, ICDS. So here we've tried to replicate the idea where the children try to grow organic vegetables for their own consumption.
And in the visually impaired school, we've also started a garden of senses where each child is given a scented plant, as in pudina, dhania, rosemary. They grow it, they cultivate it, and they nurture it. Next, we have also ensured vocational mainstreaming of these children and the disabled people in many sectors, as in soft toys making and a lot of bamboo craft. This is a very small economic activity, but nonetheless makes them very self-reliant. And recently, my government was very pleased to inaugurate a state-of-the-art old age home, Swabhiman. And here we've ensured not only the physical well-being of the elderly, but also the mental well-being. We have ensured COVID vaccination for all residents, including booster. And finally, one of the best practices of my state is we do not forget the children and the elderly people during local festival times. We ensure we gift them with some gifts to make them happy and part of the society. Last but not the least, Accessible India campaign, as it was declared yesterday, Sikkim is one of the 3 states which has given all the utilization certificates. And in fact, recently I have written to the municipal commissioners and the Secretary Urban to ensure that at the time of renewal of licenses, they please intervene and ensure that the compliances to AIC is maintained, and by this method we become disabled friendly and mainstream the disabled appropriately. Last but not the least, I would like to thank Anjali Barma ma'am for taking the initiative of organizing such a wonderful sensitization program and for making us a part of this program. And we are committed to take it forward and take the issues forward. And we have many, many takeaways from this wonderful program yesterday and today. Thank you. Namaskar. Thank you so much, ma'am. I would request you, ma'am, to kindly be on the dais, please. Any suggestions or queries from the House? Then I would again request our Honorable Minister, sir, to kindly felicitate Srimati Ganga D. Pradhan, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. I now take the opportunity to invite Mrs. Sheetal Nanda, ma'am, Administrative Secretary to the Government Social Welfare Department from Jammu and Kashmir, to kindly start her presentation. A very good afternoon to all. Honorable Minister for Social Justice, Government of India, Shri Virendra Kumar ji. Honorable MOS, Ms. Pratima Bhaumik. Honorable Minister from Punjab and Goa. And Secretary ma'am and all the seniors and colleagues present here. A very small presentation from my side. Regarding what all has been done in J&K for the persons with disabilities. Next, please. I'm pressing that, but it's not moving. Okay, I'll continue anyway. Yeah. A unique feature for J&K is that, first of all, some demographics. The total population 1 crore 25 lakhs, out of which 2.87% is disabled population.
roughly 3,61,000 Divyangjan. 1,76,355 disability certificates stand issued by the end of 2022. The number of UDID cards is 61,113. And at the moment in the schools from 1st to 12th, 21,289 children are enrolled. The unique feature for J&K that the Right of Persons with Disabilities Act was not implemented in J&K before 2019 because we had our own act, and under that act we had our own disability commissioner. However, with the Reorganization Act having been passed in October 2019, the central act is now applicable to J&K, and after that only we notified our rules. Earlier, the disability, reservation for disabled persons in J&K was only 3%. So after the Central Act became applicable, 4% horizontal reservation is being provided. The posts have also been identified after that. There is a UT level advisory board already constituted in J&K for advising the government on issues related to disability. The appointment of commissioner under the new act is now under process and is likely to be completed within this week. Schemes and benefits that are being provided. Alimco has held several camps in the last 1 year only, 31 camps, and 7879 beneficiaries have been covered, and 17,000 plus assistive aids and equipments have been provided. The government of J&K has a special scheme in which we provide motorized tricycles, as in the scooties with fitments, 3 tires on the rear side, and which roughly cost around 50,000, which are being provided by to the disabled who have more than 40% lower limb disability, and we are targeting 100% saturation in these cases in this year. So we'll be covering all those who are registered with us with more than 40% locomotor disability, lower limb disability till the last financial year closure. The J&K Women Development Corporation and the J&K SC/ST Development Corporation are providing soft loans to the disabled, in which 1091 women beneficiaries have been covered by the Women Development Corporation, and 1102 beneficiaries have been covered by the SC/ST BC Development Corporation. Under SIBDA, under the Government of India funding, we had taken up 33 buildings, out of which 7 have been completed and 26 are under progress. In this, our progress has been pretty slow under SIBDA, and the reason being largely, I think, that the PWD department, which undertakes these retrofittings, is not fully equipped to do this work. So I would request ma'am and the Government of India, if there are any ways in which the engineers can be provided trainings to do these works better, I think the speed of the work would pick up. As far as pensions are concerned, we have our own scheme which is called the Integrated Social Security Scheme, in which 1,73,615 disabled persons are receiving pension, and we have achieved saturation, as in no disabled with more than 40% disability is left in the UT who does not receive pension. Similarly, of course, the income criteria is there. The NSAP, which is the Government of India scheme, under that also 2465 disabled persons are receiving pension. We are contributing to what the Government of India is providing. We have a special scheme for people who get disabled due to militancy related activities, in which 1105 beneficiaries are receiving pension. So in all, 1,77,078,000 people are getting pension at the rate of 1,000 per month. This year onwards, we have made UDID compulsory for receiving pensions, through which we are aiming to actually achieve saturation and issuance of UDIDs also. In the pension category, while all the other pensions, which is the old age pension or the pension for widows, only the BPL or the priority households, as we call them, as per the National Food Security Act, are getting pension. But in the case of disabled, we have allowed the non-priority households also. The institutions that are there in J&K which are working for the benefit of the disabled, we were not registered on the National Trust also.
because the like the other acts, the National Trust Act was also not applicable to J&K. But in 2020, we have got registered with the National Trust, and all the local level committees have been formed, and we are trying to ensure that the committees function properly. There is a composite regional center at Srinagar, which has trained 625 professionals and 190 are under training. It provides 7 types of clinical or therapeutic services, and more than 4 lakh beneficiaries have been benefited in the institute, while they also hold camps in which they have benefited 55,000 beneficiaries. There are 3 DDRCs functional in the UT. However, the government of J&K has decided that this year, by the end of October, we have 20 districts, so we will be making all 20 functional. We have 2 halfway homes, which are homes for intellectually challenged who have come out of the health setup but are not accepted by the families. One in Srinagar and Jammu, where they stay, and their residential facilities where they are kept lifelong. And there is one school for visually impaired boys and one for girls in Jammu, and one school for disabled children, which was earlier functional in Srinagar, but then somehow we had to close it. We will be restarting it this year. So that is about it from J&K. Although I think we have a long way to go in the disability sector, but ये ऐसा sector है, I think हम कितना भी कर लेंगे तो लगेगा कम ही किया है. So thank you very much. Thank you so much, ma'am. I would request you, ma'am, to kindly please be on the dais. Any query or any suggestion from the house, please? I again request our Honorable Minister, sir, to kindly felicitate Mrs. Sheetal Nanda, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. I now would like to invite... Anupama, just a minute, please. Yeah. Sir. Ma'am, just one small piece of reflection from my end. It's heartening to observe that you are planning to increase the number of DDRCs in your state from 3 to 20. Just a small piece of information. Whenever your new DDRCs are getting established, please send the documents to us. We have very recently formed a screening committee, the purpose of which is to ensure that all the newly formed DDRCs are in compliance of the revised guidelines which have been approved recently. So once the screening committee okays a new DDRC, then and we communicate the same to you, then you can rest assured that now this DDRC is fit for getting funding from the central government. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. I now take the opportunity to invite on the dais Srimati Brigid Varshong, Deputy Commissioner for Persons with Disabilities from Shillong, Meghalaya. Honorable Union Minister, Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar, all the ministers of state, Secretary Ma'am of the EPWD, all the dignitaries, officials from different states, and my dear friends. First of all, before I start the presentation, I would, on behalf of the state government, I would like to inform that the state government is very grateful to the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, for their financial support and guidance, which we are able to progress to this extent which I'm going to present now. The next slide. As per the census of 2011, the population of Meghalaya is 29,66,889,
And the total number of persons with disabilities recorded so far is 44,317. However, this is a probable population because the enumerators in 2011, they were not trained, and now we have the trained enumerators who will be getting the right number of persons with disabilities. I would just like to also inform that we have one center, which is a State Research Center on Disability Affairs. We have the program we call the National Program for the Implementation of Rehabilitation for Persons with Disabilities scheme in Meghalaya, which was initially funded by the Ministry of Social Justice and Empowerment. And through the funding and grants which was provided by the Government of India, have helped push forward and sustain this disability service program up till 2005. From 2005 onwards till the present day, this program is being funded and supported by the state government. And the name, it has been approved to rename the NPRPD scheme to MPRPD, that is the Meghalaya Program for the Implementation of Rehabilitation for Persons with Disabilities in Shillong. Under the State Resource Center on Disability Affairs, we have the District Resource Centers on Disability Affairs. These initially were the District Disability Rehabilitation Centers, which were funded by the ministry again, and now they are funded by the state government through the Social Welfare Department and monitored by the State Resource Center on Disability Affairs. We still function with these, also the district, the early diagnostic intervention center under the State Resource Center. And the centers were established as a joint effort between the ministry and the state government in the year 2016. And we are very much in progress of these rehabilitation services because we have this proper network of the district social welfare officers and the multi-purpose rehabilitation workers and the community-based rehabilitation workers, the MRWs and the CBRWs. These are the crown functionaries working in all the 46 blocks and including Shillong and Tura, which consists of 48 blocks, under the office of the district social welfare officers in all the 12 districts. These crown workers are currently being trained on the community-based inclusive development under the Rehabilitation Council of India, Government of India. Under the State Resource Center on Disability Affairs, meritorious scholarship for students with disabilities are being provided. It was introduced in the year 2013 from class 11 onwards with an aim to encourage students with disabilities to pursue higher education. The details of the scholarships starts from 2,000 rupees, 3,000, 4,000 and 5,000, depends on the level of education. Under the State Resource Center on Disability Affairs, the disability assessment camps is being conducted regularly in collaboration with the district social welfare officers and the MRWs, CBRWs. We organize the camps aided by the team of specialist doctors, paramedical staff, and the DRC, DA, or UDID staff at designated locations in all the 48 blocks of the state with the departments of orthopedics, ophthalmology, psychiatry, and ENT. The camps cater therapeutic rehabilitation services through disability awareness and assessment camps to the people of these areas. And persons with disabilities attending these camps are then given the UDID disability certification and card. In case if 20 to 40 PWDs are identified by the MRWs and CBRWs, disability cluster camps are being conducted at that particular block or particular district. House visitations, the crown visionaries also capture videographic recordings of the person with disabilities at the village level, and with the help of the allied health professionals at the DRCDAs, the doctors assess and UDID disability certificates are issued to the disabled. Recently, the State Resource Center on Disability Affairs has initiated an internship program with various colleges and universities which will help in educating the students on disability
rehabilitation, and further encourage them to carry opportunities in the field of disability. When we come to the unique disability ID for persons with disabilities in the state of Meghalaya, we are very fortunate. With the proper guidance from the ministry, we are able to reach at the first position in the country. So how we are doing, so I'm going to inform you that we have a unique manpower and human resource model of the UDID, which this project was implemented in 2017 December, and Meghalaya was the first northeastern state to start this project. And as on 12 September 2022, 26,913 persons with disabilities have been issued a UDID disability certificate and UDID card. So just to mention you that what kind of unique manpower that we have is that the UDID project received a sanction under the state share from the government of Meghalaya on August 2018 for the creation of manpower, computer consumables, stationaries for headquarters and 11 districts. We have appointed recently 2 assistant UDID coordinators at Shillong, East Khas Hills and Garo Hills district. Meghalaya's 11 DEOs, the data entry operators catering the services of generation of the UDID to all persons with disabilities in all the districts. There are 7 district UDID in charge to monitor the progress of the UDID project on disability and UDID cards generated, working for the DEOs, registers, maintenance, file works, etc. The disability certification to the UDID, all government schemes can be availed only through the UDID disability certificates and card generated by the State Resource Center on Disability Affairs as notified by the Social Welfare Department, Government of Meghalaya. We also have a dedicated UDID project post box number 29 at the Shillong General Post Office, where all plastic UDID cards are dispatched. We also have door-to-door delivery of UDID cards to persons with disabilities through the Crown level functionaries. The UDID block awareness camps. The Office of the State Nodal Officer UDID project, with the support of the Office of the Commissioner for Persons with Disabilities, Government of Meghalaya, has held 48 block awareness programs at all the blocks, including Shillong Urban and Tura Urban. These block awareness programs aims to educate the public, the disabled population, Crown workers like ASHA, Akanwidi workers, village headmen, etc. I think one unique thing that the state has developed is the development of the Meghalaya Sign Bank. This initiative was taken by the Office of the Commissioner for Persons with Disabilities in collaboration with NIC, National Informatics Center, Meghalaya, and Dr. Melissa G. Walang, the Assistant Professor Linguistics, Northeast Regional Institute of Education Unit of NCRT Shillong. This Meghalaya Sign Bank, which is a mobile app, was launched during the observation of International Day of Persons with Disabilities on 3rd December 2018. The objectives of this sign bank is that it provides a platform for the deaf community to exercise equal opportunities in all spheres of life. It also provides a platform where the common man can also learn sign language and interact with the deaf community. The app already contains a list of approximately 5,000 words. Sign language have been integrated in the app with translation to the regional local languages of English, of Khasi and Garo languages, and also in English. This Meghalaya Sign Bank is at present available at Google Play Store and App Store. The state government has also provided grant and aid to special educators to 7 special schools because their salary is very meager. So the state government has taken an initiative to provide a kind of support to them in all the 7 special schools. Under the Chief Minister's Social Assistance Pension Scheme, the state government has enhanced the amount from 500 to rupees 750, and it will be effective from October 2022. I would also like to inform you that
the state government of Meghalaya has handed over 50 acres of land to the ministry in 2018 for the setting up of the Center for Disability Sports. And I request the central government to kindly provide the financial support so that the same can be implemented at the earliest. And out of this 50 acres of land, 20 acres has been earmarked for the center, Composite Regional Center, the permanent building. And as of now, the CRC has been allotted in a rented accommodation, and it was the state government support that, along with the ministry, we are able to run the CRC in a very functional way, and we are giving the full support to the center. And I would also like to inform you that we are getting the proper coordination, the proper support from the ministry officials, that AIC under Accessible India under Accessible India campaign phase 1, we have been able to complete 17 buildings, and another 7 buildings are yet to be completed. And with these buildings have been incorporated with all the accessibility features, and the Office of the Commissioner for Persons with Disabilities is also monitored very closely, and we go there for inspections, and pre-verifications have been done. So we are able to also complete the websites, around 85 websites now, 35 websites under Accessible India campaign, and 50 websites under the scheme of SIPDA. So, we are trying to work better with the support of the government and the ministry. But once again, I thank the ministry for their guidance and support. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Any suggestions or queries from the audience, please? If not, then I would again most humbly request our Honorable Minister, sir, to kindly felicitate Srimati Brigitte Warshong, Deputy Commissioner for Persons with Disabilities from Meghalaya. I now take the opportunity to invite on the dais Srimati B. Shailaja ma'am, Director, Department for Welfare of Disabled and Senior Citizens, Government of Telangana, to kindly start with her presentation, please. Honorable Union Minister for Social Justice and Empowerment, Honorable Minister of State for Social Justice and Empowerment, Honorable Ministers participating in this workshop from different states, respected Secretary Madam, Department for Empowerment of Persons with Disabilities and Joint Secretaries, Senior Officers, dear colleagues and friends. Next slide. Next slide. Yeah. This is a demographic profile of PWDs in Telangana as per census 2011. This is category-wise population of PWDs as per 2011 census. The total population in the state is 3 crores 52 lakhs. In that, PWD population is 10 lakhs 46,822. Next slide. These are the major programs of Government of Telangana
from which PWDs are benefited. Housing, SIBDA, state fund, assistive aids, scholarships, trainings, marriage incentives, subsidy loans, and pensions. Next slide. Like many other states, we have schemes of scholarships, both pre-metric and post-metric. Apart from, there is scheme of reimbursement of tuition fee for professional courses. We have 8 residential schools, in that 4 for visually impaired students and 4 for hearing impaired students. We are running 20 homes and hostels are for PWDs. Under DDRC, there are 50 schools are running by NGOs. Majority of them are meant for children with intellectual disability. Next slide. Inclusive education. Education department has taken several initiatives under inclusive education in the state of Telangana to benefit 32,969 children with special needs. Several services are implementing in by the education department. Next slide. Employment and self-employment. Our state is implementing 4% reservation in government employment. We are providing free coaching for competitive exams. PWDs can select coaching center for their choice. We are providing coaching fee of 20,000 to the institution, stipend of 7,000 to the candidate. This we are giving in 2 installments based on field inspection. Under self-employment, we are providing subsidy ranging 50,000 to 5 lakhs depending on the unit cost. 100% subsidy for units of rupees 50,000. Above 50,000 units, subsidy is up to 80%. We have self-help groups of PWDs, provided revolving fund from the government and also low interest loans from banks for income generating activities. That is called in Telangana Pavala Vaddi, means 3% interest. We are conducting job melas for employment in private sector. We are conducting placement oriented skill development trainings with government agencies like NAC, NSIC, NITIM as training partners. Next slide. 237 backlog posts filled with PWDs during 2021 and 22. In Telangana government taken up massive recruitment drive in this year. 80,000 posts in different government departments are going to be filled in this year. In that, in which 50,000 posts are already notified by the agencies, different departments. 2,400 posts were identified to be filled with PWD under 4% reservation through various recruiting agencies. There is a subsidy loans in bank linkage and non-bank linkage also. 782 PWD beneficiaries benefited in tune of 5 crores under economic rehabilitation scheme. Every year we are giving this 782 for every year. 1,202 PWD SHGs in rural areas to the tune of 38,000 also benefiting. 397 PWD SHGs in urban areas to the tune of rupees 9 crores 90 lakhs. 136 PWD SHGs in GSMC area through Vikasam to the tune of 2 crores and 80 lakhs.
Under Dalita Bandhu, it's a very unique program. I will explain the next slide. Next. Under social security. Under social security schemes, Telangana government is giving 3016 rupees pension to PWDs with 40% and above disability, irrespective of age and gender. Government is spending every year 1700 crores rupees, in which 4,67,845 PWDs are benefiting in this scheme. It is direct benefit transfer program in their bank or postal accounts. This is highest pension in the country. I think this is the highest pension in the country. Next social security program is housing. Our state government is implementing a unique housing program, 2 BHK. Average cost of the houses is 7 lakhs, 100% subsidy, no beneficiary contribution. There is 5% reservation for PWDs and they are allotting ground floor to the PWDs in urban areas where multi-storied buildings constructed. Last year 5,500 PWDs are benefited with tune of 385 crores. Next, assistive devices. 16,423 PWDs are provided assistive devices with an amount of rupees 20 crores in 2020 and 21. Everything is free of cost. Cost of devices ranges from 1,000 to 1 lakh. We are providing retrofitted motorized vehicles, about 1 lakh, are distributed free of cost to persons with locomotor disabilities pursuing higher studies and self-employed. Inspired by this scheme, our Honorable Minister IT and Municipal Administration, Sri KTR Ramarao Garu, has donated 100 RMVs to the PWDs under caption of Gift a Smile. Other ministers, MPs, MLAs followed this scheme and distributed many RMVs under Gift a Smile. We have production centers. We have training cum production centers where tricycles, crutches, wheelchairs are made and distributed to the needy PWDs free of cost. We have artificial limb manufacturing centers attached to major hospitals in the state where prosthetic and orthotic devices are provided free of cost. In our state, we have provided free Braille textbooks to the visually impaired students through Braille Press, 1st to 10th class. During 2018 assembly elections, we have designed a unique Braille epic card. 71,414 Braille epic cards are printed and distributed to visually impaired voters. We have created a state fund to meet the emergencies and essential needs of the PWDs. From the state fund, we have spent rupees 3 crores 5 lakhs for essential commodities, medicines, groceries, sanitizers to the needy PWDs during the pandemic situation. Difficulties faced by PWDs during pandemic have been effectively addressed by Government of Telangana. Further, we are encouraging and sponsoring PWD sports persons to prosthetic and to participate in national and international events. We are announcing the Paralympic sports persons. We are giving the gold and silver and bronze medals for, we are giving the 5 lakhs for gold medal
3 lakhs for silver, 2 lakhs for bronze. Government of India schemes. We have taken all measures for effective implementation of Government of India schemes. National Scholarship Program, as per instructions of the Secretary Madam, Government of India. Our Special Secretary has conducted meetings with the officials of Education Department. As a result, the number of PWDs applied for national scholarships has been increased. 2,243 PWDs were sanctioned pre-metric and post-metric, 404 post-metric scholarships, 28 students sanctioned scholarship for top class education. Next Accessible India campaign. Under Accessible India campaign, 9 crores 19 lakhs was sanctioned by the Government of India for structural modification of 16 buildings. 7 buildings were already completed. Remaining buildings will be completed soon. Accessibility in TSRC, RTC. 350 buses are fully accessible to PWDs. 100% concession for PWDs in city buses to 1 lakh PWDs. 50% of concession for PWDs in district buses. (450) government websites were identified. 220 websites were made accessible for PWDs. Remaining under, we will do it in soon, very soon. Under Unique Disability Identity Card, total 4,73,970 UDID cards have dispatched to State of Telangana by the Ministry of Empowerment. The cards were distributed to PWDs door to door by utilizing the services of Anganwadi teachers. For this, we have developed a mobile app for distribution and acknowledgement of from the PWD. ADIP scheme. The department in collaboration with Alimco is conducting regular assessment camps. During 2021-22, 19 camps were conducted. 4,929 beneficiaries were sanctioned aids and assistive devices worth of rupees 6 crores 88 lakhs. Under Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme, 50 NGOs in the state are functioning financially assisted under this scheme. All the provisions enshrined in the RPWD Act 2016 are implementing. In the state, and Director of Disabled and Senior Citizen is designated as State Commissioner to oversee the functions under the Act. These are the some innovative practices. Next slide, please. These are some innovative programs. Schemes are implementing for the welfare of PWDs in our state. 3 schemes are innovative schemes: Kalyana Lakshmi Pathakam and Shadi Mubarak scheme, marriage incentive, and Dalita Bandhu scheme. Under marriage incentive scheme, a disabled marries a normal person. An incentive of rupees 1 lakh will be given. Under Kalyana Lakshmi Pathakam, this is the Telangana, our government is providing 1 lakh rupees for marriage to the economically backward class girls, all girls. In that, PWDs are getting 25% extra. Higher assistance to the 1,25,000. PWDs girls are benefiting both Kalyana Lakshmi and marriage incentive. Under Dalita Bandhu is a biggest program. Biggest benefit transfer scheme in the country. Government announced an innovative scheme called for Dalita Bandhu, in which rupees 10 lakhs as 100% grant is provided to the scheduled caste families in the state for their economic benefit.
For this 9 lakhs towards scheme fund, 10,000 for matching grant contribution, another 10,000 for kept as a Dalita Raksha Nidhi. A separate fund is created to meet any emergencies of Dalita beneficiaries. It is a part of the scheme. In this 5% SC PWDs are also covered under this scheme. 595 SC benefits are with a tune of 59 crores, 5 lakhs are benefiting. Next. Yeah. State Election Commission in collaboration with the IT department has developed an e-voting mobile app. PWDs and senior citizens can register and cast their vote without going to polling booth. This will be operationalized after approval of the CEC. Next. Assistive Technology Summit. I think first time in India an exhibition was organized at Hyderabad in which entrepreneurs from all over the country have participated and showcased innovative devices meant for PWDs. It is one-stop shop for all stakeholders, promoters, awareness and cross-sectoral collaboration with the betterment of researchers and innovators, entrepreneurs and government officials. Next. These are the innovative assistive devices displayed on that day. Next. Next. This is the toll-free helpline number for persons with disabilities we established in pandemic. PWs are utilizing these services for redressal of their grievances, including availment of entertainments. In view of the response and its usefulness, government decided to continue the toll-free number continuously. Next. This is online application management system, OBMMS, for online has been developed for accessing the schemes meant for PWDs and also direct transfer of benefit. Online interface for PWDs to apply for benefits. This will be ensure that online beneficiary transparency, accountability and avoiding duplication. Scholarships. We are running these scholarships, marriage incentive awards and aids and appliances and economic subsidy. Next. This is online case file management system, a web application for online filing of complaints by the persons with disabilities. These PWs can file a complaint without approaching the office, can uploading the necessary documents, can track the status of the complaint. Portal contains important information like acts, rules, guidelines, schemes, programs related to PWDs. A special toolbar for easy access by PWDs with the features that enable users of different disabilities. Next. We are created one special employment portal for PWDs. This is collaboration with the Nirman organization, a registered NGO. This is for for PWDs and employers. Both can register in this platform. A common platform for PWD job seekers and employers. Shailaja, Yeah. can I request please? Yeah, it's over, madam. Yeah, because there are other presentations also. In Okay. Little constraint of time. Yeah, it's but over. This will get circulated and no doubt lot of e-initiatives and assistive technologies and new initiatives has been Next, taken. next. Yeah. So next one. An amount of rupees during rupees 2,261 crores has been spent during the 2021-22 under different components for the welfare of welfare and development of the PWDs by Telangana government. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. I once again request our Honorable Minister, sir, to kindly felicitate Srimati B. Shailaja, ma'am.
Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. I now invite on the dais Shri T. Rabindra sir, Deputy Director Welfare of Differently Able, Transgender and Senior Citizens from Andhra Pradesh, to kindly start with his presentation. Honorable Union Minister for Social Justice and Empowerment, Sri Virendra Kumar ji, Honorable Minister for State, Srimati Bhaumik ji, Honorable Ministers from different states, dignitaries, and Honorable Secretary Madam, Department of Empowerment of Disabilities, and my dear friends. Today I am going to present best practices implemented for Divyanjans in Andhra Pradesh. Next slide. Government have evolved a scientific software aided disability assessment strategy in convergence with the Department of Rural Development, Women Development, Child Welfare, Differently Abled, Health and Family Welfare for issuing disability certificates and ID cards on saturation mode. Accordingly, Sadram software was made available to medical boards in all districts since 2010. 171 district medical boards are functioning for issuing of Sadram certificate for persons with disabilities. As of now, 11,92,677 Sadram certificates have been issued to the persons with disabilities. Procedure for issuance of certificate for PWDs. PWD visits Me Seva Center or Gram Ward Sachivalayam with Aadhaar card. Me Seva operator or digital assistant authenticates the PWD with Aadhaar details, which is OTP based, and books the slot for assessment for disability. PWD visits the hospital on the date of appointment for assessment. Specialist doctor verifies the documents and examines the PWD and then enter the details in his login sign, digitally sign and sent to the medical board. Second and third medical doctor verifies the details entered by the first doctor and digitally signs the document. On completion of digital sign by the medical board, PWD visits Me Seva Center or village secretariat to download the certificate. Gram Sachivalayam, also known as village secretariat, are secretariats set up in the state of Andhra Pradesh to decentralize the administration by making services and welfare services of all government departments available at one place. Andhra Pradesh is the first state in India to launch village secretariats, which was launched on 2nd October 2019 on the eve of Mahatma Gandhi Jayanti, in which 500 citizen services belongs to 35 government departments were made available to cater the needs within 72 hours. 15,004 village ward secretariats, one secretariat caters to 300 households, had been established with 2,54,832 volunteers. Each volunteer serves 50 houses, around 3.24 crore people are covered. They deliver pensions and provisions on a monthly basis. They register for assessment of disabilities for issue of certificates and aids and appliances. A scheme of financial assistance under Social Security for persons with disabilities under YSR Pension Kanuka for Divyanjans, and all Divyanjans irrespective of the age are eligible. Divyanjans are sanctioned 3,000 per month on 1st of every month at their doorstep through village and ward secretaries. Under YSR Pension Kanuka, around 7.2 lakh PWDs are benefited with an estimated cost of 216.19 crore every month.
Government, in furthering its commitment to the welfare of the people, sanctions financial assistance to the people suffering from thalassemia and chronic diseases, conditions which makes dependent on regular medication or on other persons for support as follows. The three diseases which are blood related, that is thalassemia major, sickle cell disease, severe hemophilia. About 3,877 persons are benefited at the rate of 10,000 per month. About 4.65 crores are spent per annum. Bilateral elephantiasis, paralysis confining the person to wheelchair or bed, severe muscular dystrophy cases and accident victims confined to wheelchair or to bed, chronic kidney disease patients stage 3, 4 and 5 who are not on dialysis. About 25,849 persons are given rupees 5,000 per month. About 115.10 crore are given per annum. 3 residential schools for each visually impaired as well as hear impaired are functioning, and 1 junior college for hearing impaired is functioning in Bapatla. About 20 hostels are functioning for different label, studying all courses with sanction strength of 1,675, and 4 homes are also functioning in the state for destitute, different label and old age with sanction strength of 335. Facilities being provided by Samagra Shiksha. Samagra Shiksha is providing the education to children with disabilities through inclusive education. 672 Bhavita centers are functioning and providing inclusive education to the children with special needs with a strength of 13,440. 1,344 resource persons are working at elementary level in the state for providing support services that include daily living skills and basic academic skills to children with special needs. And 649 special educators are working under integrated education for disabled in secondary stage for teaching academic skills to 9th and 10th children with special needs in all districts of Andhra Pradesh. The state government is providing with facilities as identification of children with special needs, assessment, aids and appliances, resource teacher, learning materials, accessible schools and toilets, awareness programs, etc. Samagra Shiksha adopted zero rejection policy and implementing its policy so that no child is left out of the education system. Scholarships for students with disabilities under Navaratnalu scheme, which is a flagship program of Government of Andhra Pradesh. Under the scheme, Jagananna Vasati Divina, providing rupees 10,000 to ITI students, 15,000 to polytechnic students, 20,000 to the students who are pursuing degree and above courses per annum to every eligible student for food and hostel expenses. Under this scheme, 2,318 students with disabilities are benefited with an amount of 2.28 crores till date for the financial year 2022-23 in first phase. The courses amount being sanctioned by the government, phase 5, which comprises 2 phases in 1 year. Another scheme is Jagananna Vidya Divina, providing complete fee reimbursement to every eligible student on saturation mode. Under this scheme, 2,294 students with disabilities are benefited with an amount of rupees 1.89 crores till date. And the amount is sanctioned in 4 phases in 1 year. Providing of employment in state government establishment to persons with disabilities. Age relaxation for 10 years and fee exemption of application is given to the Divyanjans. Special recruitment drive has been launched with 739 posts. Backlog vacancies for persons with disabilities were identified since 2019, in which 582 posts were filled and 157 posts are under progress. Government extended time limit
for filling of backlog vacancies for Divyangans till 31st March 2023 under special recruitment drive. Another flagship program of Government of Andhra Pradesh is a job calendar. Apart from special recruitment drive, about 957 posts have been identified under job calendar for Divyangans. Housing for Divyangans in Andhra Pradesh, as per 5% reservation allotment under RPWD Act 2016, PMAY YSR urban beneficiary-led construction of houses under the scheme, 0.93 lakhs houses have been sanctioned to the persons with disabilities. PMAY YSR Gramin under the scheme, 1.70 lakh houses have been sanctioned to the persons with disabilities. Another scheme is Pedalandariki Illu, housing for all poor, as part of flagship program, that is Navaratnalu. The government is implementing the scheme as a under the scheme, 0.12 lakhs houses have been sanctioned to the persons with disabilities so far. Under all the above schemes, a total of 2.75 lakh houses were sanctioned with a cost of 4,950 crores to the persons with disabilities. Schemes implemented by Society for Elimination of Rural Poverty. In the state of Andhra Pradesh, there are total number of self-help groups of Divyangans is 3,474, consisting of 2,36,576 Divyangans. Srinidhi loans, an amount of 173.13 crores have been sanctioned to 39,659 self-help groups of Divyangans during the last 5 years. And Unnati, that is interest-free loans, an amount of rupees 0.9 crores have been sanctioned to a total number of 216 persons with disabilities for their livelihood during the last 5 years. Schemes implemented through Mission for Elimination of Poverty in municipal areas. In Andhra Pradesh, 2,220 self-help groups are consisting of 12,079 persons with disabilities. Bank linkage for an amount of 58.56 crores have been sanctioned. Okay, madam. Another scheme is Vaddi Leni Runalu, that is 0% interest. An amount of 2.41 crores have been sanctioned to a total of 421 groups consisting of Divyangans for the last 5 years. An amount of 25 crores have been allotted for the year 2022-23 for aids and appliances, and 1,989 persons with disabilities are benefited with estimated cost of 2.19 crores till date. Retrofitted motorized vehicles are provided free of cost, laptop to students with disabilities like orthopedic, hearing impaired, visually impaired who are studying IT and above courses. 4G touch phones exclusively for speech and hearing impaired for increasing better communication through video calls among family members and deaf community. For the financial year 2022-23, the Government of Andhra Pradesh incurred expenditure of rupees 2,747.46 crores for the welfare of persons with disabilities. Thank you. Thank you so much, sir. The House is open for any submissions or questions. Actually, sir, Andhra, Telangana, Tamil Nadu, all these states were doing very good scheme, Niramya Health Insurance Scheme. And most of these states, I am hearing from morning
that nobody is making emphasis on this implementation, how they are implementing, how it can be useful for what the chairperson National Trust and Secretary DPWD has already told, that 4 disability persons can be benefited, and it's a unique type of scheme of the central government that can be benefited, because across the country कोई hospitals का कोई restrictions नहीं है, therapy का बहुत ही यूनिक डिज़ाइन वो है। तो किसी भी मेरी सारी स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर फीचर्स देखा, केरला, मध्य प्रदेश, दे वर डूइंग एक्सीलेंट, लेकिन किसी के प्रेजेंटेशन में ये बात छूट रही है, या तो वो कर रहे हैं। मैम से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम इसमें जैसे आपने लोकल लेवल कमेटी के लिए कहा था, तो इस निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक यूनिक स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में। तो कैन यू ऐड समथिंग मैम प्लीज़? शुक्ला साहब, मैं ये कहना चाहूँगी कि नेशनल ट्रस्ट के द्वारा जो जो स्कीम चलाई जाती हैं, उनके लिए कल मैंने आपके JSN से बात किया था। वी हैव टू ऑर्गेनाइज अ वेबिनार, अलग से करना है, क्योंकि ताकि हम उसके और डिटेल में बता सकें, और जो आपकी निरामय स्कीम है उसको एक बार आप दोबारा से भेज दें, क्योंकि आपने सही पॉइंट आउट किया कि कोई चीज़ मिस हो रही है। तो अच्छा ये रहेगा कि पहले हम जानकारी के लिए भेज दें, और उसके बाद फिर हम जब वेबिनार करेंगे तो हम उसको और डिटेल में बता पाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू Madam, I want to add that Niramaya scheme is widely implemented in Andhra Pradesh. One of the districts is Anantapur, where it is total coverage of the scheme is done for mentally retarded and other categories. Actually, it has been implemented, ma'am, everywhere. They know, everyone is knowing, but as you suggested, we will do again and again. Yeah, and I will request everyone, please don't use the word mentally retarded, even if it is a part of National Trust Act. But let's not use this term. This is outdated term. We should not be using. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. I again humbly request our Honorable Minister, sir, to kindly felicitate Shri T. Ravindra, sir. Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Sir, I am a media person, a father of a disabled child. I want to point out here that in Madhya Pradesh, this department is doing very worst in Madhya Pradesh. From last 3 years, I am unable to find any school to give admission to my son, who is 16 years old. And sir, from here 3 kilometers away, there are so many centers for disability, but the condition you cannot enter in the gate, from the gate also. My request, like AII PMR in Mumbai, some such kind of institute should be here in Indore, because Indore is the biggest city and no hospital is giving rehabilitation. I spent around 15 lakhs on my child to the private doctors, and I got good results from AII PMR Mumbai, a central government institute. मध्य प्रदेश का जब प्रेजेंटेशन हो रहा था जी, उस समय बोला भी गया था, अगर किसी ने कुछ क्वेरी करना है, कुछ प्रश्न पूछना है जी सर, उस समय उठाना चाहिए था। अभी आंध्र प्रदेश सर एक्चुअली आई एम लेट हियर। नहीं, अभी आंध्र प्रदेश का हो रहा है। अब उसको आप अलग से बाद में जो है ना मध्य प्रदेश वालों से मिलकर बात कीजिए। Sir, nobody is hearing me from last. I had a pension paper sanctioned for my child of 500 rupees. From last 2 years, I am not getting the pension for my child. This is the condition of Madhya Pradesh, sir. I had a paper from. कहाँ से आए हैं? इंदौर से सर। नहीं तो आपको यहाँ किसने आने दिया? मैं सर एक न्यूज़पेपर भी चलाता हूँ, उसके लिए आया हूँ। नहीं, न्यूज़पेपर वालों को भी अलाउ नहीं है। न्यूज़पेपर वालों को कल बुलाया गया था। ये कार्यशाला इसमें और मैं एक फादर के रूप में भी आया हूँ सर। आई एम ए फादर ऑफ ए डिसेबल्ड चाइल्ड, फॉर दैट रिस्पांसिबिलिटी आई एम हियर। आप नेक्स्ट बुलाइए। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से सविनय अनुरोध करती हूँ, कृपया टी रविंद्र सर को अभिवादन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई now take the opportunity to invite on the dais Shri Om Prakash Deshmukh sir, Commissioner for Persons with Disabilities from Maharashtra. And due to paucity of time and so many presentations lined up, all the presenters are now requested to kindly wrap up their presentations within 5 minutes, please.
नमस्कार। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, सेक्रेटरी मैम और सभी कलीज, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मैं यह प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। आप जैसे भी इसमें स्लाइड पे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का डिसेबिलिटी परसेंट जो है वो 2.63% है एज पर 2011 सेंसस। इंडिया का 2.21% है, कि महाराष्ट्र का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अभी डिसेबिलिटीज़ भी बढ़ गई है और अभी परसेंटेज भी बढ़ने वाला है। दिस इज रिगार्डिंग स्पेशल स्कूल्स इन एंड वर्कशॉप्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखा जाए तो 1645 स्कूल्स है, ये स्पेशल स्कूल्स है और वर्कशॉप भी है। उसमें से 50% जो है वो नॉन एडेड है और 50% एडेड भी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक ग्रांट इन एड पॉलिसी तैयार की है। उसके मुताबिक ये जो नॉन ग्रांटेड स्कूल भी है, कुछ साल के बाद और परफॉर्मेंस दिखाने के बाद वो ग्रांट पे आ जाते हैं। और इसी सभी स्कूल्स में लगभग 74,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। दीज स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन स्पेशल स्कूल। उसके अलावा हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स है या रेगुलर स्कूल्स है, उसमें लगभग 2,35,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग ऐसा लगता है कि जो हमारा स्पेशल स्कूल है उसमें 25% बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 75% नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसी है। इसमें अगर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है उसमें हमारे स्कूल की संख्या ज़्यादा है। ओके, आई विल ट्राई। हाँ, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी संख्या इसीलिए ज़्यादा है कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको रेगुलर स्कूल में भेजना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी ये स्पेशल स्कूल है और इसीलिए यहाँ प्रायोरिटी महाराष्ट्र में ये जो पेरेंट्स है ये रेगुलर स्कूल के अलावा बजाय स्पेशल स्कूल में भेजना चाहते हैं। दिस इज द रियलिटी। दिस इज वन ऑफ द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, ई ऑफिस आपको तो वैसे सबको मालूम है, लेकिन महाराष्ट्र में हमने 2018 से ये सिस्टम स्टार्ट की है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर, माय कमिश्नर ऑफिस एंड गवर्नमेंट, दिस इज ऑल लिंक्ड विद ई ऑफिस। दिस इज ऑलमोस्ट जस्ट लाइक ए पेपरलेस ऑफिस। 100% पेपरलेस ऑफिस नहीं है, लेकिन 90% तो है। तो सभी जो स्कूल्स के या हमारे जो प्रोजेक्ट के जो रिपोर्ट्स आते हैं फील्ड ऑफिस में से, वो सभी ई ऑफिस के माध्यम से आते हैं। आज और कल भी मैं यहाँ बैठकर ई ऑफिस के फाइल यहाँ क्लियर कर रहा था, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। उसमें लेट तो बिल्कुल नहीं होता, फाइल मिसिंग भी नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है उसमें मेंटेन होती है और इफिशियंसी अच्छी होती है। मेरी तो दरखास्त है, अगर कुछ हमारे स्टेट्स में अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। ये ई ऑफिस का टेक्निकल फ्लो चार्ट है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। दूसरा एक जो हमारी सर्विस है, राइट टू सर्विस, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज इनेक्टेड द महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2015, और उसमें हमारे दिव्यांगन डिपार्टमेंट में 3 ये जो है सब्जेक्ट्स उसके अंडर हमने कवर किए हैं। दैट इज इश्योरेंस ऑफ न्यू सर्टिफिकेट for working in the field of disability as well as special schools, workshops and rehab centers, renewal of these residence certificates and no objection certificates given to NGOs for filling up the vacancies in the school. ये तो आपको मालूम है, आपले सरकार पोर्टल का भी एक उपक्रम है। उसके मुताबिक टाइम बाउंड सर्विस देना हम पर क्रम प्राप्त है। अगर हमारे ऑफिसर ने टाइम बाउंड प्रोग्राम में डिलीवरी नहीं दिया या कुछ डिसीजन नहीं लिया तो उसमें फिर पेनल्टी भी लगती है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम हमारे दिव्यांगन डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है और उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ कहाँ भी डिले नहीं होता। इसका मॉनिटरिंग स्टेट लेवल पे हमारे सेक्रेटरी भी करते हो और डिवीजन लेवल पे कमिश्नर यानी हम खुद भी करते हैं। अनदर इनिशिएटिव इज दिस इज
a सरल system. सरल means systematic administrative reforms and achievement by and learning by students. This portal and software is developed by NIC. This is the online system for gathering information about students, teachers, staffs and schools. वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में पूरे स्कूल डिपार्टमेंट के और सबके मिलाकर 1,10,000 प्लस स्कूल्स है और उसमें लगभग 2,25,000 2.25 करोड़ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. पहले सिस्टम अगर ऐसी होती थी कि स्कूल्स में या डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन लेना, उसको गैदर करना, उसका एनालिसिस करना, उसमें बहुत टाइम चला जाता है. लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से हमें वन क्लिक पे सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसके मुताबिक हमें जो कोई प्रॉपर डिसीजन लेने हैं दिव्यांग बच्चों के लिए या कुछ हमारे स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए, उसके मुताबिक इसमें हम काम करते हैं. और ये सरल सिस्टम बहुत अच्छी तरह से चलती है. उसमें स्टूडेंट पोर्टल भी है. स्टूडेंट पोर्टल में दिव्यांग स्कूल के हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन वहाँ होता है. उस बच्चे का दिव्यांग कार्ड और आधार कार्ड भी वहाँ अपलोड करते हैं. आधार कार्ड का हमने कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो हम काम कर रहे हैं. इसके मुताबिक हमें उस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है, जो एक्यूरेसी है, वो हमें इमीडिएट मिल जाती है. ओके, थैंक यू. और जस्ट लास्ट 2 पॉइंट्स. EKJ कोर्ट, दिस इज रिकॉर्डिंग हमारा क्वासी जुडिशियल जो हमारी अथॉरिटी है, सेक्शन 82, 80 और 80 के मुताबिक सभी कमिश्नर आर एम्पावर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ दिस क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी. इसमें हमें EKJ कोर्ट का एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है. उसके मुताबिक जो हमें नोटिसेस सर्व करनी है पार्टीज को थी ऑनलाइन, और वो नोटिसेस SMS द्वारा और मेल द्वारा भी मिल जाते हैं. और सबका ऑनलाइन हियरिंग जो है, तो ऑनलाइन हियरिंग हम इस पोर्टल पे करते हैं. डिसीजन भी इस पोर्टल पे अपलोड होता है. और एक अच्छी उपलब्धि EKJ कोर्ट के माध्यम से हमने यहाँ की है मेरे ख्याल से. और 1-2 पॉइंट मैं दोहराना चाहूँगा. दिस इज रिगार्डिंग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप. वो महाडीबीटी के अंदर हमने तैयार की है और इसमें आधार लिंक जो हमारा बैंक अकाउंट है उसके माध्यम से हम सभी बच्चों को ये स्कॉलरशिप देते हैं. रिगार्डिंग प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये हमारा काम चल रहा है और उसके बारे में हमारी जो राय है कि 1 साल के अंतर्गत हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का काम भी पूरा करने वाले हैं. और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो सभी हम डीबीटी में ला रहे हैं. अब तक नहीं थी, लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया कि अगर ये डीबीटी पे लाए तो फिर आपको ग्रांट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी. एक काम भी हमारा इस साल पूरा हो जाएगा और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है. मैंने जो प्रेजेंटेशन किया है उसमें सिर्फ IT इनिशिएटिव्स के बारे में ज़्यादा बता दिया है और बहुत सारे एक्टिविटी चल रहे हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट के कारण मैं अभी यहाँ रुक रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. I again humbly request our Honorable Minister, sir, to kindly felicitate Shri Om Prakash Deshmukh, sir. Thank you so much, sir. And I would again like to request all the speakers to kindly wrap up their presentations within 5 minutes, please, due to paucity of time. I would like to invite our next speaker, Shri Rahul Agarwal ji, Deputy Director Social Welfare, Government of NCT of Delhi, to kindly start his presentation. Good afternoon all. Honorable Ministers on the dais, my seniors and colleagues. Thank you for giving this opportunity for this presentation. Initially, I'll just take through the initiatives that we have done in Delhi quickly because of the paucity of time, and thereafter whatever good initiatives or new initiatives that we have done or we are taking, I'll take through them. So, there are basically homes and institutions that are basically functional for PWD. There are 6 homes for mentally challenged where 1 to 1-5 residents are there, 5 schools for hearing impaired, 1 school for mentally challenged, 1 school for blind boys, 1 hostel for college going blind boys where 1 hostel for girls is being operational now, and 4 halfway homes for mentally treated patients. There are the homes run for intellectually disabled. There are basically 6 homes that are there where around 1100 inmates are currently there. There are 4 halfway homes that are operational in Delhi.
These are the works that we have already done as per the provisions for RPWD Act, like State Committee for Research on Disability. I'll just take through. State Advisory Board has been notified. State Committee for Research on Disability has been constituted. State Advisory Committee to assist the state commissioners has been constituted. Model Equal Opportunities Policy has been framed. Special courts has been designated, ISJ as the judge. Special prosecutors, public prosecutors have been appointed. Special educators in all Delhi government schools have been appointed, where 1700 special educators have been appointed so far. One good initiative that Delhi government has taken is there are resource centers that are being started. There are 31 resource centers that we are planning to start, where 4 are almost operational, which for which the NGOs partner have been given the work, and 13 electrical and other works have already been done. In these resource centers, what we are planning to do is we will be providing free services like OT, PT, special educators, speech therapists, counseling, etc. But one good initiative that we are doing is we are screening all the children in Delhi government schools for early detection of disabilities. Two-pager, very simple tool has been devised. Basically, depending on what is the difficulty of tool has been devised on the basis of for which that tool, which person would be using that tool. Like for example, an Anganwadi worker, it's a different tool which would be very simpler. The complexity will increase when that tool is used by parents to screen their children, and once it goes to the special educator, then the complexity of the tool would be different. So that if anyone misses the child, they can refer that to the medical practitioner for final diagnosis. This is just raising a red flag. They would not be actually diagnosing, it would be referred to the medical practitioner. Then thereafter, high support need assessment boards have been constituted. The scheme for high support is also under process, where we would be giving 2,500 rupees per month additional support as pension under high support need. Under Accessible India campaign, 19 buildings were identified, out of which 7 have already been made accessible, and the rest are under process. In transportation, around 17,881 buses are there in total. 4,319 has been made accessible, and rest are under progress. Under ICT, 178 websites were identified, 53 have already been made accessible, and 37 are under process. Okay. Now I'll take you the other initiatives that we have taken, which I could not include in the website. Education resource centers I have already discussed. Special educators, around 1,700 has already been appointed. Pensions, around 1,10,000 pensions we are giving to disabled people, and around 2,500 rupees per month is what we are giving. To make the system of pension simpler, we have included that into doorstep delivery program of Delhi government, where a person can call a mobile Sahayak, pay 50 rupees, and his application, everything would be filled, all the documents would be collected by the mobile Sahayak at his doorstep. So he would not have to go to a cyber cafe or other places where he gets harassed or has to pay more. Similarly, a grievance addressal help desk, which is WhatsApp enabled, call enabled, and email enabled, has been operationalized in all 11 districts of Delhi and also at the headquarters. Through WhatsApp, they can send their queries, their complaints, etc. It's a proactive follow-up system, where if they send us a query, we follow it up and they reply them on the WhatsApp itself. So it makes very easier for them to actually get their grievances, or at least know the status of their pensions and their difficulties quickly without coming to the offices. Third, we are planning to basically do a biometric authentication of all the PWDs as well as all the pensioners in Delhi, through which a person would be going there with a handheld device and take their live photograph, biometric authentication, their all documents, everything would be, so that it sanitizes the data and also would eliminate all the duplicates and ineligible candidates, so that the real candidates can get opportunity for the pension. That's also under process. There are other schemes where there is a transport subsidy scheme of Delhi government, where we are planning to give 10,000 rupees annual as transport subsidy to all the students, disabled students going to Delhi government schools and other schools in Delhi, where 50% attendance would be mandatory, so that at least it encourages them to go to school, and their attendance should and would help increasing their attendance. There is another scheme, Sugamya Sahayak scheme, that is also the cabinet note has already been processed. Free aids and appliances would be given in camp approach, where 1 crore rupees proposed amount per district is 1 crore rupees, where free appliances would be given. We are tying up with LMCO for that,
and in all the 11 districts camps would be held, and they will be given free, all kind of free aids and devices. Then there are mobile mental health units, around 11 teams are there, which are already operational in Delhi. Early detection screening tool I have already discussed. Then there is special training program that we are organizing with our partners, where we would be training all the PWD engineers, as well as we will be targeting schools in accessibility. We realize that normally PWD people are the most key players when it comes to accessibility, because the engineers, although they should be knowing all the norms, but we normally notice that many of them are not aware. Even the JE and their contract partners, they are not aware about what are the tactiles are, what exactly needs to be done. They again and again make the same mistake, leads to a lot of wastage of resources, make the same buildings again and again. So I think it's very important that those people should be trained properly in accessibility with all the latest norms. So we are devising special programs for them in Delhi. Then in accessibility, there's a pilot project going on where we have selected 5 roads in Delhi, and we conducted a social audit through School of Planning and Architecture. The social audit report has already been submitted for those 5 roads, where 1 road in each district was selected, like Lodi Road, Shamnath Marg, Vivekanand Marg, Jail Road, and Maharaja Agrasen in east. And contracts have been already awarded to make them wheelchair enabled and accessible in all respects. Then camps were also held in all the districts, where UDID cards and other referral services and services were provided to all the PWDs, and we are planning to have more camps in each district of Delhi very soon, I mean this year as well. So I'll just stop my presentation here. Thank you. Thank you so much, sir. As pointed out by the Honorable Minister yesterday, that there are some glitches in the in our portal, or there are some problems from your side or from our side. Let's resolve that and increase the percentage of UDID coverage. Ma'am, we are really trying hard now. Earlier in 3 years, our percentage was only 7%. We were the last in Delhi. Yes. Now in last 3 months, we have reached to 15%. So we doubled in just 3 months what were there in the last 3 years. Yes. If we get really more need support. to, because there are real serious issues actually at some places, which is putting the beneficiary at discomfort. We need to resolve those issues with that objective. Right, ma'am. Right. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I again request our Honorable Minister, sir, to kindly felicitate Mr. Rahul Agrawal ji. Thank you so much, sir. I take the opportunity to invite on the dais our next speaker, Ms. K.S. Latha Kumari ma'am, State Commissioner for Persons with Disabled and Director, Department of Empowerment of Differently Abled and Senior Citizens from Karnataka. Ma'am, we would like to again request you to kindly wrap up the presentation within 5 minutes, please. Yeah, definitely. Ellargu namaskaralu. I'm extremely happy and deemed it a privilege to be here as one of the participants in representing Karnataka state. It is really an opportunity to know about the best practices of different states and can exchange and adapt best practices by our state in the interest of PWDs. I thank the GOI for conducting this kind of programs and inspiring states to implement successful programs for PWDs in the days to come. So I will sail through very briefly. So this is my small presentation. So I will start directly. I will go to the initiatives by the government of Karnataka. Next slide, please. Yeah, thank you. So in Karnataka, as per the 2011 census, we have 13.24 lakhs PWDs, 2.17% of total population of the state. And I will briefly tell the best practices adopted by the department and implementing following scheme for the welfare of PWDs. In the education field, we have special schools and again government schools for hearing impaired, and we have special schools under grant in aid and under child-centric scheme, and we have a scholarship to the student with disabilities, and schemes of incentive to the monitoring students with disabilities.
and the reimbursement of fees for the students, and we are giving talking laptops for the students with visual impairment, braille books, and we have a teacher training centers for special education, and we have daycare centers for, next slide please, daycare center for the mental retarded and CP, autism and multiple disabilities. And we have planning to establish digital book bank, and we are issuing braille kits, and we are going to establish braille cum talking library. Under skill development and employment, we have financial assistance for self-employment for PWDs, the scheme called Aadhaar. Then we have, as like any other state, we have reservation in government services, and Narega scheme we're also covering under RDPR department, and we have employment and training cell with the National Rural Employment and scheme and the Urban Rural Employment Skill Development Department, and we have been conducting job fairs in collaboration with NGOs for providing employment opportunities to the PWDs, and placement was also provided. And we are issuing free sewing machines to the HI, hearing impaired persons. And with regard to rehabilitation, we have early intervention programs. Especially for the HI, we have Shushavya, Speech Therapy Training Center for Hearing Impaired children below 4 years. Along with their mother, they will be trained. And we are having a scheme just like any other state, aids and appliances to the PWDs. And we have been issuing motorized two-wheelers. And the one more scheme, medical relief funds. And DDRCs also we have out of 31 districts, we have in 17 districts we have DDRCs. And Niramaya, and we are even the payment of premium to the beneficiaries will be given freely through our districts only we are giving. And we have a very unique program called Gramina Punarvasati Yojana, where this scheme is being implemented in nearly 6,000 panchayats. We have appointed village rural workers, urban rural rehabilitation workers, and at the district level, and the state coordinators also we are having. And apart from that one, we have off-way homes for mentally ill person, and again social security schemes, again, monthly allowances, and the residential homes for a destitute mental retarded women and men, and insurance schemes persons with mentally retarded for the parents and guardians we are having, and incentive schemes for those who marry differently able men and women, and child care allowances to visually impaired women to take care of her child or children, and unemployment allowance also we are having. And at the district level we are having information counseling center for PWDs. Then reservation policies, we are having 3% reservation in allotment of land, site, houses from the various departments. Okay, thank you. So this is a very brief presentation. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. I request our Honorable Minister, sir, to kindly felicitate our speaker, K.S. Latha Kumari, ma'am, please. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. I would now take the opportunity to invite on dais our last speaker of this session, Ms. Monica Lal, ma'am, Director, Divyangjan, Uttar Pradesh. Honorable ministers on the dais and respected all, I will quickly take you through the presentation. Okay, I straight away come to the major things we are doing in the state.
We have a braille press, and we are not only supporting our department, but we are also supporting the other schools as well, whether it is through NGOs or whether it is through education department. Okay, there again we have artificial limbs and accessories scheme. We have recently launched a motorized scheme last year also. Now it is 100% state funded, and for each constituency 100 motorized tricycle has been given. Now the scheme, marriage incentive, reward scheme for disabled. There are 3 categories. For male Divyangjan, we give 15,000 as grant, 20,000 if female is Divyangjan, and 35,000 if the couples are Divyangjan. Okay, in social security scheme, we have Divyangjan maintenance grant. In this, we are giving 1,000 rupees per month, and leprosy pension scheme. In this, we are giving 3,000 per month. Now, we are also doing Aadhaar authentication for both the schemes, so that there is no duplication, and this work is being carried out in a very fast pace. And this has been done basically through all schemes. Now, corrective surgery, we are giving 6 lakh as a grant, and for other corrective surgeries, we are giving only 10,000 as a grant, and these are for the minor surgeries. Another scheme we have is shop construction and operation. Here we are giving 20,000 for our shop construction, and 10,000 we are giving for a shop operation, which is in 75% loan and 25% as a grant. Then we have a helpline, and we have in last 5 years disposed 29,853 cases. We have bus travel facilities, and now we are giving free to all the Divyangjans. Okay, we have a state level awards where we are motivating the people who are doing good work in this field. Then I'll come to the major part. Dr. Shakuntala Mishra University, this is a national rehabilitation university. It has been established in Lucknow. The best part of this university is that it is a complete accessible building. Here 50% seats are reserved for Divyangjan, and 50% seats are reserved for visually impaired students. And there are facilities like free education, hostels and meal. In this campus only, we have an artificial limbs and rehabilitation center, where the equipments are provided for any beneficiary who can come at any day, and on that very day we provide the equipments. There is an exclusive stadium for physically challenged. There are special schools. I would only like to tell about the schools that recently we have come up with one platform which is called as a Gyananand, which means a scarcity and happiness from knowledge and wisdom. Now, what we are trying to do through this is that there are shortages of staff. So, in the first phase, we are trying to build up a platform where the faculty would come, impart the lesson, and that will connect to all the schools. Apart from this, there would be other things as well, like online attendance, sharing of the resource material. We would be also taking help of the community, so that even if they want to come and contribute and teach the students, so we will record it and send it across. Okay, I'll just wrap it up. Yeah. Next thing I would like to tell you about the UDID. We were given target and we have finished that in a mission mode. While implementing this, we discovered a lot of things which were maybe our CMO department didn't implement it in right manner. They presented the data without
cleansing it or without deseeding it. So it was an inflated data they had presented it. That's why we were not able to achieve the desired result. We are presently working upon holding camps so that we are able to saturate the entire population through this. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I would request you, ma'am, to please be on the dais. Again, most humbly, I request our Honorable Minister, sir, to kindly felicitate Ms. Monica Lal, ma'am, for the presentation, please. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. So with this, ladies and gentlemen, we have covered the session for presentations of states on best practices and success stories. And now we'll be having a short break for tea. After the tea, we'll be having the closing ceremony followed by lunch. So I request you all to kindly collect back together by 2:40 p.m. please. Thank you. सब यही करा दीजिए। हाँ, सब सर सीट पे ही करा देते हैं सर, ताकि हम आगे का कार्रवाई जो है शुरू कर सकें। जी, I would now take the opportunity to invite on the dais respected Joint Secretary Rajiv Sharma sir to kindly discuss the takeaway of this 2 days workshop, sir. मंचासीन माननीय मंत्रीगण, सचिव महोदया, वरिष्ठ अधिकारी एवं सहकर्मी कर्मचारी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज ये 2 दिवसीय कार्यशाला समापन की ओर धीरे धीरे अग्रसर है। मुझे एक जैसे कि हमारे जो प्रोग्राम है मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसमें लिखा हुआ है टेक अवे, तो मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि हम जब भी किसी जाते हैं रेस्टोरेंट में तो पूछता है सब हैव इट टेक अवे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं वी हैड इट एंड वी आर टेकिंग देम अवे आल्सो। तो आइडियाज़ हमको यहीं मिले और हम उनको लेके जा रहे हैं और अमल करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ बड़े धन्यवाद ज्ञापन के साथ में और बड़े हर्षातिरेक के साथ में कि माननीय मंत्री जी ने इस कार्यक्रम को शुरू में ही जो गति, जो मोमेंटम प्रदान किया, वो मोमेंटम अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अर्थात उस गति से बल प्राप्त करके सभी केंद्र सरकार के अधिकारियों ने, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगणों ने एवं अधिकारियों ने जो अपने विचार रखे, वो मुझे लगता है कि दिव्यांगता क्षेत्र में दिव्यांगजनों की सेवा को आगे बढ़ाने में दूर तक कारगर सिद्ध होते रहेंगे। जो कार्यशाला थी ये इसमें सूचनाओं की भरमार थी। सूचनाओं की भरमार ऐसा नहीं खाली खूब सारे फैक्ट्स फिगर्स खाली बम्बार्डमेंट कर दिए गए थे, बल्कि खुशी का अनुभव ये बताते हुए हो रहा है कि किसी भी टॉक के बाद में जो हमारे प्रतिनिधि आए हुए थे राज्यों से, उनके पास वो सूचनाएं सही ढंग से लैंड कर रही थी। जिस उद्देश्य से वो सूचनाएं प्रेषित की गई थी वो सूचनाएं लैंड कर रही थी। और जैसा कि मैंने कल की अपने छोटी सी वार्ता में ये निवेदन भी किया था कि इस तरह की कार्यशालाएँ होती ही रहती हैं, किंतु नए हम सफ़र इस यात्रा में जुड़ जाते हैं, जिसके लिए उनको कई सूचना, कई कंसेप्ट बताने ज़रूरी हो जाते हैं, भले ही वो रिपीटेटिव नेचर के हों। तो मुझे लगा लोगों से बातचीत करके चाय नाश्ते लंच के दौरान कि चीज़ें लैंड करी हैं और कई सारी चीज़ें इनके हमारे जो प्रतिभागी थे कार्यशाला में उनके लिए आई ओपनर भी साबित हुई हैं। चाहे राज्य हों, चाहे वो केंद्र शासित क्षेत्र हों, सभी ने अपने अपने इलाकों में होने वाली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे हमको रूबरू कराया है। और साथ साथ
एक सकारात्मक आलोचना भी जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वो भी हुई है, और उस आलोचना को क्योंकि सकारात्मक ढंग से की गई थी, सुधार के उद्देश्य से की गई थी, उसको सराहों पे लिया गया है, सो दैट जहाँ जहाँ गैप्स रह गए हैं उन गैप्स का उन्मूलन करके हम योजनाओं को और भी प्रभावशाली बना सकें। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ गौरतलब बात यह है कि केंद्र सरकार ने एक न्यूक्लियस के रूप में कुछ योजनाओं को चलाया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों ने अपनी दिव्यांगता क्षेत्र में दिव्यांगजनों की सेवा के लिए अपनी अलग से भी योजना चला रखी हैं। ये एक्चुअली हमारा जो फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन बॉडी पॉलिटिक है उसके तहत ये वांछित भी था, और ये बहुत सुन के बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसे कि उड़ीसा ने हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लेक्स बनाया है रिहेबिलिटेशन के लिए, और जिसमें उन्होंने जो वयोवृद्ध हैं और जो डेस्टिट्यूट हैं उनका भी समावेश किया है। हमने देखा कि विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र उन्होंने अपनी जो सार्वजनिक भवन हैं उनको सुगम्य बनाने में भी दिलचस्पी दिखाई है, और बल्कि वार्ता के दौरान ये भी देखा गया कि सभी ने बताया कि साहब यूसी हमारी इतनी कम रह गई है। कुछ लोगों ने प्रश्न किए इनफॉर्मल बातचीत के दौरान, जो इस तरह की कार्यशाला से अपेक्षित भी होता है कि साहब कितने प्रतिशत यूसी होने पर हमको अगली किस्त फंड्स की मिल सकती है। ये बहुत ही खुशी की बात थी। जैसे तेलंगाना ने जिक्र किया कि उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए मैरिज अलाउंस का प्रावधान रखा है। ये सभी राज्यों के लिए एक आई ओपनर है और एक शिक्षाप्रद बात है, और हमारे लिए भी जिस संवेदनशीलता के साथ में इस कार्यशाला में न केवल भाग लिया, वरन मैं देख रहा था कि जब हर राज्य से आए हुए, चाहे हमारे मंत्रीगण हो या उनके राज्यों से आए हुए अधिकारीगण हो, अपने अपने राज्य के बारे में वहां पर विभाग के द्वारा जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी जब दे रहे थे, तो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों का प्रयास होता है कि दिव्यांगजनों के क्षेत्र में हम उनके, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे कौशल की बात हो, चाहे सुगम्य भारत अभियान की बात हो, फिर चाहे उनके दिव्यांगजनों की विवाह में सहायता देने की बात हो, उनसे संबंधित विविध क्षेत्रों में हर राज्य अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है। और केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पारित होने के बाद इस क्षेत्र को जो नई दिशा दी गई है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जिस गतिशीलता के साथ में काम को आगे बढ़ाया गया है, उसका आज हम देखते हैं पूरे देश में प्रभाव दिखाई दे रहा है। मैंने कई राज्यों में यहां पर देखा कि जब यहां पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, हर राज्य में कुछ ना कुछ नया, कुछ अच्छा करने का प्रयास किया गया। दूसरे राज्यों को उन राज्यों में की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी मिली। अब वो चाहे छोटे से छोटा सिक्किम राज्य क्यों ना हो, या यूडीआईडी कार्ड की बात करें तो त्रिपुरा राज्य क्यों ना हो, मध्य प्रदेश ने तो यूडीआईडी के कार्ड के क्षेत्र में 111% पर जाकर अपने कार्य की पूर्णता की है। यह बताता है कि राज्य सरकारें अगर संवेदनशीलता के साथ में आगे बढ़ने का जब दृढ़ निश्चय करके आगे आती हैं, तो उससे न केवल उन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में उनको लाभ पहुंचाया जाता है, बल्कि मैं देखता हूं, कल का मैं उदाहरण आपको बताता हूं। कल अपना कार्यक्रम यहां पर शाम को जब समापन हुआ, मैं इंदौर के एक अंधमुख बधिर शालाओं छात्रावास में गया। उस छात्रावास में लगभग 700 के आसपास मूक बधिर छात्र छात्राएं देश भर के लगभग 23 राज्यों से, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, उस
संस्था का संचालन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो स्वयं मूक बधिर हैं और 1974 में उन्होंने उसको प्रारंभ किया। पति पत्नी दोनों ने जब उसको प्रारंभ किया तो प्रारंभ में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और लोग बात कहते थे कि कैसे करेंगे आप, लेकिन मन में जब दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव होता है तो असंभव को भी संभव कर देना कठिन नहीं होता है। वहां जाकर मुझे बहुत अपार प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि मैं शायद अगर यहां नहीं आता, कि मेरा प्रयास भी होता है चाहे शासकीय कार्य से या व्यक्तिगत कार्य से, जब भी किसी भी राज्य में जाता हूं या किसी शहर में जाता हूं तो उस कार्य को करने के साथ ही साथ मंत्रालय के एक दूसरे संबंधित संस्थाओं में जरूर जाता हूं। और यहां पर मैंने जैसे ही समाप्त हुआ मैं तुरंत 15 मिनट में यहां से बाहर निकलकर वहां पर गया। हमारे जो देख रहे हैं कि साथी यहां पर जो साइन लैंग्वेज में सारे कार्यक्रम का कल से लगातार और रूपांतरण करते हुए हम सभी को जानकारी दे के साथ में उन सभी ने हम सभी का स्वागत किया। उनका उत्साह वास्तव में देखने लायक था। हर राज्य में ऐसे अंधमुख बधिरशालाएं छात्रावास हर राज्य में चल रहे हैं। चलना बात अलग है, लेकिन दिल से चलाना, उनके साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ना, उनकी संवेदनाओं को समझना और संवेदनाओं को समझकर उनके लिए हम बेहतर से बेहतर हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। और जब इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने उस संस्था में देखा कि स्वयं मूक बधिर रहते हुए भी उनके अंदर जो दिल है, उनके अंदर जो संवेदनाएं हैं, वास्तव में वो अथाह सागर हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ऐसे व्यक्तियों से तो जीवन में प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और उन्हीं के कार्य को देख करके सीख करके बाकी स्थानों के लोग भी उससे प्रेरणा लेकर ऐसी ही संवेदनशीलता के साथ में अगर संस्थाओं को चलाएंगे, दिव्यांगजनों के प्रति किए जाने वाले अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इससे दिव्यांगजनों के मन में एक बड़ा आशा और विश्वास का संचार होता है। नंदा मैडम यहाँ पर बैठी हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के भी थे, हमारी कर्नाटक की बहनाएं हैं, कर्नाटक के भी थे, उसमें झारखंड के बच्चे भी थे, उसमें उड़ीसा के बच्चे भी थे, उसमें नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी थे, उसमें केरल के बच्चे भी थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, उसमें देश के लगभग 23 राज्यों के बच्चे थे। मैं संभवतः ऐसा इतना बड़ा मूक बधिर केंद्र जो है ना संस्था मैंने पहली बार देखी। और उन वहाँ पर रहने वाले जो बच्चों के साथ में जब मिला, उनके चेहरे बता रहे थे कि यहाँ पर आकर वो उनको कितना आत्मिक सुख मिल रहा है। उन बच्चों का चेहरा बता रहा था कि ये संस्था सही मायने में जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रही है, बच्चे को चेहरे उस बात को बताते हैं कि वो यहाँ पर जिस भाव को लेकर आए थे, उनके अभिभावकों ने जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर अपने बच्चों को वहाँ पर भेजकर वो निश्चिंत हो गए, वो वास्तव में संस्था उस दिशा में बहुत सार्थकता के साथ में काम कर रही है। हमारे बहुत सारे राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो बातें रखी गई, अभी हमारे जब राजीव जी ने उनमें से बहुत सारे राज्यों का उल्लेख किया। उड़ीसा के हमारे माननीय मंत्री जी जब कल बता रहे थे कि उड़ीसा में और जैसे एमपीलेट फंड के माध्यम से और अंशराशि देकर एडीप योजना के ट्राई मोटराइज गाड़ी देने का प्रावधान है, उड़ीसा में वह पहल की गई कि वहाँ पर विधायक निधि से भी और इस तरह के यंत्रों का सहायक उपकरणों का वितरण किया जा सकेगा, विधायक भी उसमें अपनी राशि दे सकेंगे। ये इस तरह की मतलब शुरुआत हैं जो इस तरह की कार्यशाला के माध्यम से देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों के सामने जब आती हैं तो बाकी स्थानों पर भी जो है ना इस तरह से करने का प्रेरणा मिलता है। कई राज्यों में देखा, उत्तर प्रदेश में बताया गया कि अभी उत्तर प्रदेश में के 100% जो है ना राज्य सरकार के द्वारा देकर उसको किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिल्ली सरकार में राजन जी ने बताया। फिर इसी तरह से गोवा में जो कार्य किए जा रहे हैं, गोवा की सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों के संबंध में हमारे सुभाष देसाई जी ने उन्होंने भी यहाँ पर उल्लेख किया। बाकी हमारे अधिकारियों के द्वारा भी बहुत प्रभावी ढंग से बताया गया। एक जो 3D स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से जो नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं रक्षाबंधन को मैं दिल्ली में था और रक्षाबंधन को हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हमारे अधिकारियों ने कहा कि 2 दिन पहले हमको बताया कि पुटकला गांव की एक बेटी है, पुटकला गांव की बेटी को स्पाइनल बेसिस जो है ना वो उसको बनाया गया है और
उसको बुलाते हैं, बोले मंत्रालय बुलाकर उसको यहाँ पर उसको पहनाया जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये हमने कहा पहला बनाया, मंत्रालय ने इसको शुरुआत कर रहे हैं, उस बेटी को हमने कहा यहाँ नहीं बुलाया जाएगा। मैंने कहा मैं वहाँ पर जाऊँगा, आप लोगों को चलना है तो आप लोग मेरे साथ चल सकते हैं। और रक्षाबंधन के दिन सुबह मैंने कहा मैं ठीक 8 बजे निकलूँगा। मैं 8 बजे निकला और जाकर हम अपने अधिकारियों के साथ में जब पुटकला गांव में पहुंचा तो उस बेटी के परिवार के परिजनों को जो आश्चर्यजनक प्रसन्नता हुई उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पूरा परिवार इतना भावनात्मक रूप से इतना प्रसन्न हुआ कि हमारी बेटी के लिए ये स्पाइनल ब्रेसेस लेकर स्वयं मंत्री जी अपने विभाग के अधिकारियों के साथ में आए, उस बेटी के लिए वो स्पाइनल ब्रेसेस पहनाया गया। वो पहनकर इतनी प्रसन्न हुई कि इसका बिल्कुल एकदम लाइट वेट है और हमको इसमें किसी भी तरह की असहजता अनुभव नहीं हो रही है। ये इससे हम अपना सारी गतिविधियों का संचालन, सारा काम जो है ना बहुत आसानी से हम कर सकेंगे। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये हम सब चाहे राज्य में हों चाहे हम केंद्र में हों, ये हम सब ने मिलकर संवेदनशीलता के साथ में इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार में एक जमुई गांव, जमुई स्थान है, जमुई का एक सोशल मीडिया में समाचार आया और सोशल मीडिया में क्या देखा, एक बच्ची जिसका एक पैर तो है, दूसरा पैर घुटने के यहाँ से नहीं था। वो बच्ची एक पैर से उचक उचक कर अपने साथी बच्चों के साथ में और स्कूल जाती थी। सोशल मीडिया में जब ये समाचार आया, मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत अपने विभाग के अधिकारियों को बुलाया और कहा कि तुरंत वहाँ पर जा कर के सबसे पहले उस बच्चे के लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराओ, उसके बाद उसके पैर का नाप लेकर और वह कृत्रिम पैर बनाने की पहल की जाए। विभाग के अधिकारी हमारे वहाँ गए, उसको ट्राईसाइकिल दी, उस बेटी के पैर का नाप लिया, उसको फिर बाद में वहाँ से बुलाकर हमारा दिल्ली में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारा संस्थान है, उस संस्थान में उसको 15 दिन तक वहाँ पर रखा गया और वो कृत्रिम पैर लगाकर जब वो स्वाभाविक गति से जब वो चलने लगी, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ में वापस अपने स्थान पर गई। मैंने देखा कि वो बाद में वीडियो आया कि वो बच्ची न केवल अपने साथी बच्चों के साथ में चल कर के स्कूल जा रही है, बल्कि जब वो बच्ची स्कूल पहुंची तो वहाँ पर क्लासरूम में उस क्लास के सारे बच्चों ने ताली बजाकर जो है ना उसका स्वागत किया। और वो बच्ची भी जब बच्चे नाच रहे थे तो बच्ची भी अपने कृत्रिम पैर के साथ दोनों पैरों से और खुशियाँ व्यक्त करते हुए नाच रही थी। हमारे दिव्यांगजनों के जीवन में सुगम्यता लाने का एक जो सुगम्य भारत अभियान है, वास्तव में ये केवल एक जिले की, एक राज्य की अकेली जिम्मेवारी नहीं है। जिले के साथ साथ राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की सामूहिक रूप से इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। कई राज्यों में हमने देखा कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली में राजेंद्र पाजी ने बताया और हमारे उनके जो अधिकारी थे उनके द्वारा जो बताया गया था कि चाहे वो बसों की बात हो, चाहे ऑफिस की बात हो और चाहे अस्पताल की बात हो, बाकी राज्यों में भी बताया गया कि वहाँ पर स्कूल में, बसों में, अस्पताल में, ऑफिस में, सारे स्थानों पर जाने के लिए और सुगम्यता के साथ वो पहुँच सकें, जा सकें, इसके लिए रैंप भी बनाए गए हैं, रेलिंग भी लगाए गए हैं। लो फ्लोर बसों का भी जो है ना बहुतायत मात्रा में वो प्रयोग किया जा रहा है। और बसों में जो स्कूली बसें होती हैं, स्कूली बसों में पीछे की तरफ से जो नई टेक्नोलॉजी के साथ में नई बसों का जो मॉडल आ रहा है, उस मॉडल में बच्चा जो है ना सीधा अपने ट्राईसाइकिल के साथ में, जो अपने मोटरसाइकिल के साथ में सीधा उसमें जा सकेगा। इस तरह की बसों की सुविधा भी स्कूली बच्चों के लिए उसको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये जो सारे विषय जो है ना विभिन्न राज्यों के द्वारा जो गतिविधियां उनके राज्यों में अलग अलग तरीके से चलाई जा रही हैं और उन गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन में सुगम्यता लाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास जब इस तरह की कार्यशाला का आयोजन होता है और उस कार्यशाला के माध्यम से जब हम एक राज्य के जब हम प्रतिनिधि यहाँ पर आकर जब अपनी बात रखते हैं तो हम सभी को जानकारी मिलती है। हमारा कल जब कार्यशाला प्रारंभ हुई तो केंद्र सरकार के जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान हैं, राष्ट्रीय संस्थानों ने और हमारे बाकी जो विभाग हैं, वो सारे यूनिट के सारे हमारे अधिकारियों ने एक ने आकर यहाँ पर उनके संस्थान के द्वारा की जाने वाली सारी गतिविधियों का विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई। और उसमें से जैसा कि कई हमारे साथियों ने कहा कि कुछ पहले की कार्यशाला में वहाँ पर केवड़िया आए थे,
कुछ उसमें से नहीं आए थे। लेकिन जब हम इस तरह की कार्यशाला में आते हैं तो केंद्र सरकार के सामाजिक सशक्तिकरण, हमारा जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किस तरह से दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा है, वो सारी की सारी जानकारी एक स्थान पर हम सभी को प्राप्त हो जाती है। वो जानकारी लेकर जब हम अपने राज्यों में जाते हैं, उस जानकारी का हम अपने राज्य में दिव्यांगता के क्षेत्र में हम कैसे प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, उस योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं। अब उसमें कुछ स्थानों पर कुछ तकनीकी इशू भी लोगों ने बताए यूडीआईडी कार्ड के संबंध में। हमारे अधिकारियों ने कहा कि अब उसको शीघ्र ही उसका निराकरण और हम लोग उसमें करेंगे। अभी मैं कई स्थानों पर कई राज्यों में होकर आया तो हमने देखा कि कई राज्यों में यहाँ पर बताया भी गया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग जो है ना वो किए जा रहे हैं। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया गया कि हमारे वहाँ की जो साइन लैंग्वेज का खासी और वहाँ की स्थानीय भाषाओं में उसका रूपांतरण किया गया। अब ये साइन लैंग्वेज को स्थानीय भाषा के साथ में बदलने से उस राज्य के जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को अपनी शिक्षा प्राप्त करने में वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, सुविधा हो जाती है। सरकार की भी यही मंशा है, केंद्र सरकार की भी यही मंशा है, राज्य सरकारें भी यही चाहती हैं। तो ये योजनाएं बनाई जाती हैं, वो योजनाएं पूरे देश के लिए बनाई जाती हैं। जब देश के लिए बनाई जाती हैं तो उसमें जिम्मेवारी हम सबकी सामूहिक होती है, किसी एक की नहीं होती है। केरल में रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है, वो केरल राज्य में जो भाषा का प्रयोग होता है उस भाषा साइन लैंग्वेज का उस भाषा में उसको जोड़ते हुए कैसे केरल के विद्यार्थियों की उनकी शिक्षा को कैसे सुगम्य बनाया जा सकता, उसको तमिलनाडु में जोड़ते हुए तमिलनाडु की भाषा में, फिर हमारे हिमाचल के लोग हिमाचल की भाषा में, नॉर्थ ईस्ट के लोग नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग भाषा में, गोवा में भाषा जो होती है कोंकणी भाषा जो उसमें उपयोग करते हुए ये सारी गतिविधियां दिव्यांगजनों के लिए जहां ये को शिक्षा और शिक्षा के साथ ही साथ केंद्र सरकार ने साइन लैंग्वेज तो बनाई है, साइन लैंग्वेज के साथ ही साथ 10,000 शब्दों की एक डिक्शनरी भी बनाई। वो डिक्शनरी के शब्दों का भी हमारे दिव्यांगजनों की शिक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी उसका अच्छे ढंग से आने वाले समय में उसका काफ़ी प्रयोग देखने में आएगा। अभी पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की पुस्तकों का रूपांतरण किया गया। इस वर्ष 6वीं कक्षा का साइन लैंग्वेज में रूपांतरण किया जा रहा है। इसको आगे 12वीं कक्षा तक की पुस्तकों का रूपांतरण करने के लिए हम एनसीईआरटी के साथ में विभाग बड़ी दक्षता के साथ में इस काम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब मिलकर, अभी एक बिंदु मैंने देखा है कि सबके प्रेजेंटेशन में बताया तो गया है लेकिन बहुत कम उसके बारे में बताया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षा के साथ साथ हम दिव्यांग छात्रों के लिए हम उनके कौशल विकास की गतिविधियों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये कौशल विकास शिक्षा के साथ साथ उनके जीवन में स्वावलंबन लाने के लिए, आत्मनिर्भरता लाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। और स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम राज्यों में वहाँ पर हर राज्य की अलग अलग मतलब आवश्यकताएं होती हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू बहुत होता है तो नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू की बहुतायत होती है। बैम्बू का प्रयोग करके कैसे तरह तरह की चीज़ों को बनाने का प्रशिक्षण हम अपने दिव्यांगजनों को वहाँ पर दे सकते हैं ताकि वो अपनी शिक्षा के साथ ही साथ और बैम्बू के तरह तरह के मतलब चाहे वो ड्राइंग रूम में रखने वाली चीज़ें हों, चाहे चिक बनाने वाली चीज़ें, चाहे टेबल पर जो है ना रखने वाली चीज़ें हों, चाहे वो फर्नीचर बनाने वाली चीज़ें, इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कल मैंने आपको एक दिल्ली के एक स्कूल का मैंने उदाहरण दिया था। ऐसे आपके राज्यों में अनेक उदाहरण हो सकते हैं कि उस राज्य के कुछ विद्यालयों के द्वारा इस तरह की गतिविधियों को बहुत अच्छी तरह से उसको बढ़ाया जा रहा है। ये दिव्यांगता के क्षेत्र में जो हमारा स्किल ट्रेनिंग का काम है, कौशल विकास का काम है, और कौशल विकास में प्रशिक्षण देने के उपरांत जब बच्चा अपना शिक्षा से बाहर आता है या बड़े नवयुवक ने और कौशल विकास में ट्रेनिंग ली, स्किल ट्रेनिंग ली, स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहता है तो काम प्रारंभ करने के लिए दिव्यांगता विकास निगम उसमें मदद करता है। राज्य सरकारें भी अपने इसमें बहुत सारी योजनाएं दिव्यांगों के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकारें भी योजनाएं चल रही हैं, अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन के क्षेत्र में भी
दिव्यांगजनों को कैसे उनका सशक्तिकरण किया जाए, क्योंकि दिव्यांगजन, मैंने देखा है कि हमारी ये जो एडिप योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए जो ट्राइज मोटराइज साइकिल दी जाती है, ये ट्राइज मोटराइज साइकिल देश के हजारों दिव्यांगजनों के जीवन में एक नया उजेला लेकर आई है। मैंने कई स्थानों पर देखा कि वो ट्राइज मोटराइज साइकिल लेकर जब दिव्यांगजन जाता है, पहले वो दिव्यांगजन घर पर बैठा रहता था, परिवार के लोग कहीं शादी में जाना है, यहाँ कहीं अन्य किसी काम में जाना है, कहीं मंदिर दर्शन करने जाना है, वो कहते थे ये तो घर पर हैं, ये घर को देखते रहेंगे, परिवार के सारे लोग चले जाते थे, शादी में जाते तो उसको छोड़ जाते थे। अब उसके चेहरे की मतलब मासूमियत देखिए, उसके हृदय की व्यथा का अनुभव केवल वही दिव्यांग अनुभव कर पाता था। लेकिन ये ट्राइज मोटराइज साइकिल मिलने के बाद मैंने देखा बहुत सारे दिव्यांगजन आज उस ट्राइज मोटराइज साइकिल पर कोई उस पर बेकरी का सामान रख के, उस पर ब्रेड का सामान रख के, उसमें पेस्ट्री रख के, केक रख के, बिस्कुट रख के, और शहर में बाड़ में जाकर सुबह से निकलता है, बेचने के लिए चल पड़ा है। मैंने कई दिव्यांगजनों को देखा, उन्होंने रेडीमेड कपड़े लिए और वो रेडीमेड कपड़े अपने उसमें गाड़ी में बांधकर जो है ना, साप्ताहिक हाट बाजार में जाकर उसको बेचने जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने लगे हैं। कई दिव्यांगजनों को देखा हमने, कहा कि वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने घर में रहकर और कोचिंग देने का, ट्यूशन देने का काम किया करते थे। लेकिन ये ट्राई मोटराइज साइकिल मिलने के बाद आज वो ट्राई मोटराइज साइकिल लेकर 4 और स्थानों पर जाकर कोचिंग देने का और ट्यूशन देने का काम और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से करने लगे हैं। बहुत सारे दिव्यांगजन दैनंदिन परिवार के उपयोग में आने वाली प्लास्टिक की सामग्री को उसमें गाड़ी में बांधकर और गलियों में लेकर निकल पड़ते हैं। शाम को जब वो वापस लौटते हैं तो जो दिव्यांगजन पहले घर के कोने में बैठा रहता था, वो दिव्यांगजन शाम को जब सामान बेचकर जब वापस आता है तो परिवार के लोग आगे आकर कहते हैं, तुम इसको मत खोलो, हम इसको खोल दे रहे हैं, इसको रख देंगे, गाड़ी भी रख देंगे, जाकर मुँह हाथ धो और जाकर चाय और नाश्ता लो। तो उसको एक सम्मान भी मिलने लगा है, उसके अंदर एक स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का भी भाव आ रहा है। और वो आज न केवल परिवार के लिए, जबकि कोई एक दिव्यांगजन जब आर्थिक रूप से सशक्त होता है तो केवल अकेला व्यक्ति सशक्त नहीं होता, वो परिवार को भी सामर्थ्यवान बनाने में, परिवार के विकास में भी अपना आर्थिक विकास योगदान देता है। जब परिवार सामर्थ्यवान होता है तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज आत्मनिर्भर होता है तो जो बात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि आत्मनिर्भर भारत में सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सबका सामूहिक प्रयास। तो देश के विकास में हमारे दिव्यांगजनों का भी, उनका भी सामूहिक प्रयास जुड़े, वो भी विकास में अपनी भागीदारी जोड़ सके। उसके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो सारी की सारी योजनाओं का हम और आप सभी ने मिलकर कल से ये संवेदीकरण कार्यशाला प्रारंभ हुई, और इसमें आप सभी ने अपने अपने सुझाव रखे, विचार रखे, कई तरह के प्रश्न भी आपके मन में आए, वो प्रश्नों को भी आपने रखा और उन प्रश्नों का भी समुचित समाधान करने का भी प्रयास किया गया। इसके आगे भी ये हमारा काम जो है ना, ये काम यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि ये काम हमारा यहाँ से और आगे बढ़ जाता है। आगे अगली बार जब हमारी इस तरह की संवेदीकरण कार्यशाला होगी और उस कार्यशाला में हम मिलेंगे, तो आज हम यहाँ से जो लेकर जाएंगे, हम अपने राज्यों में जाकर और अपने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से, चाहे हम मंत्रीगण हों, चाहे हम संबंधित विभाग के हम अधिकारीगण हों, हम सब मिलकर दिव्यांगजनों को शिक्षा के क्षेत्र में, दिव्यांगजनों के कौशल विकास के क्षेत्र में, दिव्यांगजनों के सुगम्य भारत अभियान के क्षेत्र में, दिव्यांगजनों के उनके कौशल विकास के साथ साथ उनका अपना स्वावलंबन बनाने के क्षेत्र में, उनकी शादी की सहायता योजना के क्षेत्र में, ऐसी सारी योजनाओं के संबंध में हमने यहाँ पर जो जानकारी ली है, दूसरे राज्यों को जो जानकारी दी है, उस सभी को समन्वित रूप से और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सारी योजनाओं को सामूहिक समन्वित रूप से हम अपने राज्य में आगे बढ़ाते हुए हम किस तरह से अपने राज्य को इस क्षेत्र में आगे ले जाने में हम सभी में कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा राज्य नंबर 1 पर रहेगा। हम दिव्यांगजनों के क्षेत्र में काम करने में हमारे राज्य को सबसे नंबर 1 पर हम लेकर आएंगे। जब हम सामूहिक रूप से कदम मिलाकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में
जो दिव्यांगजनों को आज बड़े उससे जो देखा जाता था, ये दिव्यांगजन इस देश के विकास में न केवल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए करेंगे, बल्कि दिव्यांगजन जहां जिस क्षेत्र में बैठेंगे वहां उस क्षेत्र में बैठकर अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए, चाहे वो कंप्यूटर का काम करने के लिए बैठें, चाहे शिक्षक के रूप में अपनी समाज को सेवाएं दे रहे हों, चाहे कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ करके अपनी सेवाएं दे रहे हों, वो समाज जीवन के जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, कदम से कदम मिलाकर देश के विकास में अपना योगदान देंगे। और यही तो है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इसमें सबका सामूहिक विश्वास। मैं आप सभी ने 2 दिन इस कार्यशाला में अपनी गरिमामय उपस्थिति से और अपने बहुमूल्य विचारों से, सुझावों को जो हम सभी को सामूहिक रूप से साझा किया है, मैं उसके लिए अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं और आपके राज्यों के सहित ही देश भर के दिव्यांगजनों के जीवन में सुगम्यता लाने का संकल्प लेने का भाव लेकर हम यहाँ से जाएंगे। ऐसी ही शुभेच्छाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय तथा हृदय से आभार। बड़े ही रुचिपूर्ण तरीके से आपने हमारा मनोबल बढ़ाया। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। अब मेरा नम्र निवेदन उप सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री मृत्युंजय झा जी से कि वे कृपया आभार व्यक्त करें। सबको नमस्कार। इस 2 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला के सफल संचालन की अंतिम कड़ी में धन्यवाद प्रस्ताव करना मेरा सौभाग्य है। सर्वप्रथम मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र जी का सहृदय धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो सर शब्द कम हैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। जिस प्रकार से आपने इस कार्यशाला के लिए हमें प्रेरित किया, मार्गदर्शित किया और लगातार अपनी 2 दिवसीय उपस्थिति से इस कार्यशाला को सफल बनाया, और ख़ास करके जो अभी आपने कार्यशाला का उद्घाटन भी किया, कार्यशाला के लिए आपने जो कार्यशाला में चर्चा का सूत्रधार भी किया आपने सर, और जो समापन जिस प्रकार से आपने किया है, मैं सहृदय एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं सर आपको। तत्पश्चात मैं धन्यवाद देता हूं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी का। हालांकि किसी व्यस्तता के कारण वो आज उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यशाला में वो शामिल हुए और हम सबका मनोबल बढ़ाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सहृदय धन्यवाद करता हूं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री मैडम प्रतिमा भौमिक जी का, जो लगातार इस कार्यशाला में 2 दिन उपस्थित रहीं और इस कार्यशाला में बिल्कुल एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैडम, हम आपका सहृदय धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका इसी प्रकार हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। इस कार्यशाला में 4 राज्यों से माननीय मंत्री जी आए। मैं उन चारों मंत्री जी का सहृदय धन्यवाद करता हूं। मैं उनका नाम लेकर उनका धन्यवाद उनको ज्ञापित करूंगा। उड़ीसा से श्री अशोक चंद्र पांडा जी, वो मेरे ख्याल अभी सुबह तक थे, व्यस्तता के कारण निकल गए होंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि न सिर्फ उन्होंने इस कार्यशाला में अपने बहुमूल्य समय से निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि कल बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हमें बताया कि कैसे उड़ीसा सरकार इस दिशा में विभिन्न पहल कर रही है, जो अन्य राज्यों के लिए भी बहुत सारे उसमें से पहल अनुकरणीय हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा पंजाब की मंत्री महोदया का, डॉक्टर बलजीत कौर मैडम का,
कि वो लगातार 2 दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं और अपने बहुमूल्य समय से निकाल कर यहाँ आई। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गोवा के माननीय मंत्री जी का, जो अभी कुछ देर पहले तक थे, श्री सुभाष फलदेसाई जी का, जो लगातार 2 दिन कार्यक्रम में रहे और उन्होंने कल भी हमें संबोधित किया और आज अपने राज्य का प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया। ये बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायी है कि वो किस प्रकार से एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर में। दिल्ली के हमारे माननीय मंत्री जी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारा सौभाग्य है कि वो अभी तक उपस्थित हैं कार्यक्रम में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने समय से बहुमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के लिए जो हमें लगातार मार्गदर्शन करती रहती हैं हमारी विभाग की सचिव महोदया मैडम अंजलि भावरा जी, उनका मैं सहृदय धन्यवाद करता हूं। और मैडम, हमें उम्मीद है कि आप मंत्रालय में रहकर हमें आगे भी मार्गदर्शित करती रहेंगी। हमारे विभाग के संयुक्त सचिव श्री राजेश यादव जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो RPWD एक्ट, उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और RPWD एक्ट के बीच सामंजस्य है और दोनों में जो कॉमन प्रोविज़न्स हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और जो आज से 25 साल आगे का हम भारत बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, पूरा देश काम कर रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। साथ ही साथ इस कार्यशाला के आयोजन करने में हमें हमेशा इस कार्यशाला के हर पहलू के बारे में मार्गदर्शित किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं हमारे विभाग के अन्य संयुक्त सचिव महोदय श्री राजीव शर्मा जी का, जिन्होंने हमारी जो 3 मुख्य योजनाएं हैं विभाग के, उसके ऊपर बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही कुशलता के साथ उसके बारे में यहाँ शेयर किया प्रेजेंटेशंस। जो हमारी सुगम्य भारत अभियान योजना है, जो DDRS और DDRCs है, और जो UDID स्कीम है, जिस पे कि सभी राज्यों की तरफ से हमें काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स मिले इन 2 दिन के कार्यशाला में कि सब लोग उसको संख्या को बढ़ाएंगे। हमारे विभाग के उप महानिदेशक महोदय श्री किशोर जी सुरवाड़े का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारे विभाग की, जो राष्ट्रीय कार्य योजना है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया और इस कार्यक्रम के संचालन के लिए वो सूत्रधार रहे। उसमें जो ये कार्यक्रम का संचालन हुआ है जिस योजना के अंतर्गत, उसका भी मार्गदर्शन सर आप करते हैं। इस कार्यशाला में शामिल 19 राज्यों के सभी अधिकारियों एवं प्रतिभागियों का मैं सहृदय स्वागत करता हूं, जिनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। और सिर्फ उनकी भागीदारी ही नहीं हुई है, उनका बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हुआ है। ऑलमोस्ट हमने हर एक राज्य का प्रेजेंटेशन यहाँ हुआ और हमें बहुत कुछ सीखने का मिला। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ समय अभाव के कारण। हम सभी अधिकारियों का, जो सचिव महोदय आए, जो दिव्यांग आयुक्त आए, निदेशक महोदय आए और अन्य सभी अधिकारीगण, सबका सहृदय स्वागत करता हूँ। मैं सहृदय स्वागत करता हूँ हमारे विभाग के अंतर्गत कार्यरत 9 राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक एवं अन्य अधिकारीगण का, जिन्होंने अपने हमारे इन संस्थाओं के बारे में बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया और मैं समझता हूं कि बहुत सारे राज्यों को उसमें से बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी और शायद आगे हम राज्य के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। तो प्रत्येक हम अपने निदेशक और अधिकारी महोदय को के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं विशेष करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूं निपिट सिकंदराबाद जो हमारा संस्थान है, उसके कार्यवाहक निदेशक श्री राम कुमार जी का और उनके सभी स्टाफ मेंबर्स का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत अथक प्रयास किया है। खास करके मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, जो कार्यक्रम की संचालिका हैं अनुपमा खन्ना, वो भी उसी संस्था में काम करती हैं और मुझे आप सबके साथ शेयर करते हुए अपार खुशी है कि ये उनका प्रोफेशन नहीं है,
वो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं। अनुपमा खन्ना जो कार्यक्रम की संचालन कर रही हैं कल से, वो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हैं, लेकिन उनकी इस दक्षता को हम उपयोग करते रहते हैं इस कार्यक्रम में। उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मीडिया के सहकर्मियों का, जिन्होंने बहुत अच्छा कवरेज किया और हमारा मनोबल बढ़ाया। आप सब ने देखा होगा आज टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे अखबारों में बहुत अच्छा कवरेज हुआ इस कार्यक्रम का। और इसमें मैं खास करके जो हमारी मीडिया कंसल्टेंट हैं सुप्रभा, उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो काफ़ी प्रयास करते रहते हैं इसके लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस बैंक्वेट हॉल के मैनेजमेंट है, जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर्स के, और उसके हर एक स्टाफ मेंबर्स को, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम के संचालन में हमारा मदद किया है। मैं आप सबका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने मंत्रालय के, अपने विभाग के सभी सहयोगियों का, सभी सहकर्मियों का, जिन्होंने न सिर्फ इस कार्यक्रम को संचालन में मदद की है, बल्कि यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और इसको सफल बनाया है। और अंत में मैं इसी विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे और दिव्यांग जनों का हाथ थामे साथ चलेंगे। We will meet again and we will walk together holding the hands of दिव्यांगजन्स। इस शुभेच्छा के साथ कि आप सबकी वापसी की यात्रा सुखद व सुरक्षित हो, मैं आप सबका एक बार पुनः सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देवी और सज्जनों, आप सभी का पुनः धन्यवाद। We will now proceed for lunch. The lunch is served in Maple Hall.